Good evening, friends. Here we are on an interesting journey together, part of the education initiative of Brokers Forum. Like all programs, this program is also available for view at any time on our BBF channel, YouTube channel, BBF India. Today's an update or an educational webinar or a refresher course on something that we are doing every day for many years, but something that we really need to do properly going ahead. Because this will become a very critical part of a broker who is doing clientele business. Segregation files is something we have been uploading as claim members. The trading members have been giving it to the claim members, and there are often mistakes made by people out of sheer ignorance, not because of any bad intent. And that this today we try to solve this. Today we have in the standard format of BBF webinar, we'll have a presentation by the BBF officials followed by Q&A. We have all the major exchanges, all the major clearing corporations with us to take any questions that may come up. Here we go. So what is the background of the segregation? Is very important. The concept of allocation and segregation was introduced by the SEBI circular of 3 July 2021. And the concept came out from the circular, and the operational issues on that was given by the clearing corporations thereafter. The nice thing is we often complain separate formats. All clearing corporations have used the same format. Though they've changed the title. In the title, they've changed the names. They have put a little English deposited with ICCL, NCL, M6CL, but that's about it. The meat has not changed. The process is as in the books of the clearing corporation, obviously, they're clearing members who they recognize, and each trading member will be loading their part of the information to the clearing member. This is typically a PCM. Then the clearing members, the self-clearing member or the PCM or a TCM will consolidate all the data and upload it to the relevant clearing corporation. And if a clearing member is clearing member of multiple segments of different clearing corporations, or even if multiple segments of the same clearing corporation, we'll have to upload the data for every segment, every clearing corporation. He or she cannot forget to do any of that. Is it critical? Because this data across all CCs are shared by the CCs and market infrastructure institutions between themselves, and is used very, very seriously for regulatory monitoring. If you have noticed, many of our other uploads are slowly being phased away because this is a consolidated place where we get all the data from the MI point of view. This will be used more and more for regulatory monitoring, and this will become the primary data source for the MI. It's almost already primary, and it's only going to get more. So we cannot afford to make mistakes in this data. Frankly, unpardonable is the word, because it's like a bank who has forgotten to, who's lost track of the bank balances of his customer, has not updated it somewhere. Right? And some serious enforcement pain is going to come, and then we can keep on crying, hey, this is too much, but this is going to be a problem. So please, 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 please get your substance and processes. Many other uploads are stopping. This upload has to be very, very carefully done. Even the deadlines are sharp. Initially, when the file came, they said you have to upload by 5 p.m. the next day. Otherwise, you can upload with a delay. And there are people who loaded at 5:01 and got penalized at times. But May 2023, they have revised the stand and say we have to upload the entire file by T+1 end of day. So the entire day to figure out what's going on, what's happening, all the bank reconciliation, all the entries, blah, 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 and just load it before you go home or work from home if you so choose. If you miss the T+1 working day deadline, then we cannot upload. Kaam khatam. And then you keep on giving excuses, this happened, that happened, and then we are at the mercy of the regulatory authorities. We better have a good reason. If there's an earthquake, your building collapse, okay, probably they will listen. Otherwise, we don't know. The nice thing about segregation file is you can keep updating the data throughout within the deadline. For example, if I load the Monday data Tuesday morning and realize something is wrong, and Tuesday afternoon I can reload the data, and the last loaded data will simply overwrite the previous data, old records.
Please, when you upload the record that with hundreds and thousands and millions of lines, please look at the response file of each and every piece of data we uploaded. If there's a failure, please reload it. I've seen failures for differences even one naya paisa. So please. What do we plan to do today? We'll look at every column, every piece of data that we upload in the file. We'll discuss mistakes, queries, tips, jugards. If we are not clear, we'll get clarifications. And if required, we'll give suggestions to the MIs. Because these events are not only events of uh, getting gyan from our MI friends, it's also giving feedback, our gyan, to the MIs. And it's always a beautiful two-way communication. Now, first, let's get this, let's get our head wrapped around this animal. Segregation file is a file that's created by our systems and uploaded to the Clean operations on a daily basis. Previously, there were 51 columns. And in Jan 2023, they became 65 columns. And it's going to change. 65 may become 60, it may become 80, depending on how the laws change, how the data requirements change. But the basic funda is the same. Number one, if I look at all the columns, I've divided mentally into 6 sets. So technically, the set is not a technical word, it's just a term I've used for the purpose of this presentation. Set one are the details of a broker member client. Tum kaun ho, tum kya ho. Set two are assets received from the client. This is most important. We really need to get this part sorted because any underreporting or overreporting there means that we have lost control of our back offices, which is not a great thing to say. Then after set two of the assets we receive from the customer. Set three is how much of the assets are lying with me as a trading member or a self-trading member is also trading. Set 4 and 5 is, hey, if it's not lying with me, if I've given it to a claim member and just lying with him, that's typically a professional claim member. What is the status there? And sixth is, which of the assets have actually reached the clearing corporation and are lying place with the clearing corporation. Ideally, everything should be 6. Every 2 should become 6. The 2 should not be lying in 3, 4, and 5 to the extent possible, unless there's a regulatory exception, which we'll talk about. There's something which is there's been a lot of hue and cry and a little pain point, though effectively doesn't affect anything. If a client has traded in the last 12 months, all right, and is not closed, then we need to upload a nil file 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Client A001 0, client A002 0. We need to upload it if we have no assets for 12 months till he has last traded. But if it is if it's a UCC which is closed in all the segments, then we don't need to upload this. All right. This is a clarification that is being given when we are making this PPT. We'll ask the MIS to reconfirm this so that people are actually. But if a client asset is lying with you and assets are not nil, we will have to keep on uploading till such time that asset is lying with me. It is not us, it belongs to our clients, we're merely trustees. So let's go one by one. Let's go to first set. Now this column A, B, C, D, E, F, G, then your column 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 until 65. I have put both the identifiers, you choose whatever like. So column 1 is the date, the B is the CM PAN, claim member PAN, 3 is the trading member PAN. In case of self-claim member, the CM PAN, TM PAN would be same. Fourth is the CP code, the state of for custodian participant, custodian settled clients, the custodian participant PAN, the client PAN is the sixth one, account type. So in this segregation file, we have all the, for every client, we do this, but if it is our own money or own records we need to upload, then we put a P for pro and everything else is C, even the custodian participants are C. C, in my opinion, is the most critical part. P, one could argue, why do you need the P? But fine, it's always nice to have the data. Let's see. In the next review of the segregation file, probably request for that. But we'll cross the bridge when it comes. Now there are segment columns. Okay. Now first there were the client columns and the segment. For every client, we have to mention which segment we have this information is pertaining to. Now, some exchange have some claim corporations are multi-segmented, some claim corporations are single segmented. So there's a CM, which is a cash segment, F4, futures, options, currency derivatives, commodities. We also have this OF. It's very interesting here. I just noticed when I was making a PPT that OFS is defined as a separate segment.
No, it is not exactly a separate segment. It is a sub-segment of CM. So I doubt many of our members would be using OFS to report any client balance. We all put it in CM. So I would request MIs to actually review this, and if you really want this or have some more clarification on what you want in the OFS part. And of course, 9 is the UCC code. In case of prop account, the CP code can be blank. Otherwise, you have to put whatever the UCC code of the client is. Now, after the 51 columns, they added the other columns. So some set A, set B, set 3 got went into end. So the MTF, non-MTF indicator of the client, which came in 2023, we put it in. I believe it should be a part of set 3. So now value is it an MTF client or non-MTF client? All right. And now MTF is obviously a part of cash segment. So if you're a claim member of MCXCCL, who's reporting for the commodity segment, definitely there won't be any MTF for you. Cash segment is currently only by 2 exchanges in this country and cleared by 2 clearing corporations, or 3, I think. Let's see. So it's only a CM segment thing. It's just an indicator. For example, client code A001, CM segment non-MTF, client code A001, CMCA segment empty. For those who do MTF. So that's sort of set 1, the details of iconic. Now set 2 for every client. We have to get details of assets received from the client. So what of the client is lying with us in terms of assets? So there's a 10th column, a financial ledger balance. So in case of mostly my examples would be more a client-TM relationship, but it's also applicable for CPCM relationship and TMCM relationships. So in the books of the client, in the books of the broker, what is the financial ledger balance? Now this is very weird. This actually, every broker has a different kind of accounting practice. Some people could have. Some people have settlement day billing. Some people have T day billing. Some people debit the margin into the khata. Some people don't do it. Whatever nonsense we are doing in our books, so nonsense on a lighter vein, of course. Whatever accounting practices, whatever the number, this number is what is supposed to appear in 10. This is what is required. It could be negative balancing. This is more like a MIS actually, number 10, but not necessarily so, because it's used for other purposes. Till such time there's a regulatory mandate for us all to have a particular accounting practice. This is what it is. On 11 is the clear balance. This is where all the different accounting practices are taken out and a clear balance emerges. So if you are doing a T0 billing, fine, go jump. You have to remove all the open bills and you have to come to T1 figures. If there are checks issued which are not cleared, check received which are not cleared, they have to be taken off. If you are debited or done some margin obligation side, please remove it. If you have obviously in the financial, because we are supposed to maintain a ledger for early paying, those figures appear in column 10, but in column 11 they are supposed to be removed. And then there's column 12. Friends, for the purpose of segregation and control of client assets, column 11 is the figure. Column 11 is the actual client money lying with you, which needs to be accounted for. Column 10 and 12 are, in my opinion, more like a MIS, though obviously it has its value, but it's more information. B is the yarn. Now we come to column C, the peak financial ledger balance. This is the highest balance available during the day. This will typically be used for calculating the peak margin obligations and alerts around that. Now, this is something which I find fascinating and kind of incomplete. So we have taken the peak financial ledger balance to check the peak margin, but we do not take the peak securities balance. Clients are given pledge margins, securities to us. Bhai, uska peak kahan capture ho raha hai? वो नहीं होगा. Probably MIS can take it directly from depositories if they can. Otherwise, that's probably a column which will appear one of the days. Now there's certain new columns that were added, which I believe should be a part of set 3, which is set 2, sorry, is uncleared receipts. So any check received from the client which is not cleared, it goes here. Payment gateways, often the money comes from the client. We give them limits, the money comes to us. It's almost like uncleared check. So that goes here. Column 65 was added. Cash collateral for MTF position. So the data is being captured here. So this is all the money received from the clients.
Now this is all these words are nice. It's always nice to put everything in examples, and those examples actually help clear your mind. So there are some 8 or 9 examples that will help us take through this. First example, suppose the client gave us a check of rupees 10, or payment gateway payment of rupees 10, and I'm a self-paying. And on Monday and Tuesday, the check got cleared. I got a clear balance. How do I report on Monday evening my segregation file, which I report by Tuesday? But Monday evening segregation will be like this. So the date is Monday, CM pan, TM pan, because SCM is the same. CP code CP code not applicable. Client का जो भी pan है डाल दिया. Account type client, segment CM, client A001, it's a non-MTF. The financial ledger balance is 10. Okay, there's a check receipt, so it's 10 of financial ledger balance. But the clear balance is 0 because it's not cleared. And column 53, this was added, has the uncleared receipts. So this is how the data comes. A client has not done anything given a check of rupees 10. So the financial ledger balances where we capture it. But if I change the example a bit, on Monday, client gave me an EFT of rupees 30. Very good. What do I do? Then it is fairly simple. My financial ledger balance is also 30, and my financial clear balance is also 30. And all our data is the same. And uncleared receipts is 0 because nothing uncleared left. So this is how the data of our clients and the funds and the ledgers are being captured in the segregation file. No rocket science if you really look into it. It's only the data so humongous that it gets scared. Now, friends, the trick is the column 10. For all these columns, no human can actually go through each and every number like this. But use the total spell. What should column 10, if you total it, there'll be some debit balances, there'll be credit balances. The total of the file created with the segregation file would be equal to the debtors minus creditors figure in your trial balance. So often, if you have 10,000 records, you upload the file got fat, and only 5,000 got uploaded, 5 did not get uploaded, that's a problem. But if you look at the segregation file, look at the response file and say total kitna aaya? And total say total is sir 100 rupees. And if you look at the balance sheet and we have creditors of 200 and debtors of 100, then okay, 100 tally. This is how we should all use totals very well. All right, so number 10 would be an easy total. Now, so this is the money part we have received from the clients. I'm going too fast. If somebody has things, you can always hear me out. You can always see this program again on YouTube. Slow down, rewind, reverse, whatever you want. But it's a long PPT, so I'm a bit fast today. So that is the money we got. Apart from money, हम client से क्या ले सकते हैं? We take bank guarantees and MTs from the clients. Now here we're talking about third-party BGs and third-party FDs, right? Now these are those FDs and BGs which we take from the client and put in an Almira. Okay, for example, a very large H&M and a very large broker. So just give me a BG, I'll keep it to myself, I will not use it. This is what this is. Very few, around 10 or 20 brokers in this country are probably using this facility because the margin is blocked from their own capital. So it really needs to be a deep-pocketed, high-net-worth broker. In the current SEBI circular, this old circular of June 23 and the current modified version of December 23, this has been kind of banned. We cannot take third-party FD from the clients and put it in the Almira. It's just not allowed. All right. Bank guarantee is allowed, but only for commodity segment. Okay, because so please read the SEBI circular. And the main, we believe the understanding is because we don't want money to be lying in the system, we want it to be upstream, and these third-party FDBGs cannot be upstream to the clean corporation. So, boss, we don't want to promote these kind of industry practices, and this is what is happening. Commodities have been given a bit of a leeway because they're still growing as a segment. So let's take the example. A client, he said his 30 rupees ledger was there in the cash segment, and he gave 31 rupees for a bank guarantee for commodity. All right. So this is how our segregation file will go. So there'll be two records because they're two separate segments. First segment is the CM segment, on which 30 rupees is definitely there, a financial balance and the clear balance. Then there'll be a second line, I'm assuming it's the same clearing corporation, which says the CO, commodity segment.
And there you have 31 rupees of bank guarantee receipt from in column number 30. So this will give you some idea of how this thing is to be uploaded into the system. Moving ahead. Apart from now, we have taken funds from the clients, very good. We have taken FDBGs from the client for the Almira, very good. What other funds of the clients is available to us? Now, there are two records. One is the credit entry in the ledger in lieu of EPF and pool account. Now, look at the explanation. It says only you need to do it only if you're considering it for margin purposes for the day. So probably you don't want to do it. But if you do it, again, if you remember the peak margin clarification says ki up to 80% of early pain you can post in the early pain ledger. But if you don't post, it's your wish. Okay, but if you don't post, you can't claim credit. So this is what it is. So if a client has sold the shares, early pain is done. 80% value you can probably put in column 20. And this column 21 probably will disappear going ahead. But if the client sells the shares, doesn't do block mechanism, but transfer the shares or securities into a pool account. And we, for some reason, we cannot do the early pay. And the securities are lying with us. When look, but the securities are there, then the amount of margin for those sell can be put in column 21. But once we get something like a direct payout compulsory or 100% block mechanism and the pool may kind of disappear, column 21 will become a thing of the past. But till such time it is there, a majority brokers would probably have nothing in 21. So again, example, client sold securities worth 40, 80% of 40 is 32. I would like to do that. So in my segregation file for this client, if we cashed financial ledger as 32, clear balance is 0, and credit entry column 20 is 32. Right? Now, this was, we are totally on set 2, what we got from the clients. And we received funds initially, very good. Then we received EPI pool balance credit, very good. We also received securities. So those securities that we received in the form of margin pledge is where it comes here after appropriate haircut. So 15 is all the cash equivalent securities. For example, sovereign gold bond, liquid B, they come here. 16 is approved non-cash component, but they approved securities. For example, all the FNO securities, all of them are approved by Clayton Corporation for placing margin. Then 17 is non-approved securities, for example, a group 2 security. Okay, or even a group 1, which is not approved, not following the approved list of Clayton Corporation, but we can take as margin from our customers goes in 17. And 18 is commodities, which we can take. Example. There's a SGB, a client gave by margin pledge 51 rupees of SGB post haircut, 52 rupees of approved securities, and 53 rupees of group 2 securities, which is not approved, but it is group 1. So this is how it will appear in the segregation file. Client. Column 15, 51, column 16, 52, column 17 is 53. Okay. This is how I'm trying to build, instead of making a huge segregation file and complicated stuff, I'm trying to break it down so that next time you see the segregation file, it's simpler to fathom and figure out. And receive from clients in the set 2, we have also something called others. Now, what is others? Can the client mortgage his house to you? I don't know whether it's allowed or not. A member actually agreed it is allowed. But then when the new service circular says that everything you take from the client should be upstreamed, now house mortgage would not be allowed. So this is probably just a column kabhi kuch dalna pade to rehne do, and this would usually be 0. So please have keep on looking at the totals of all the columns and see what is getting generated by our back office. Now, set 1 is we had the client member details. Set 2, what we receive from the client. Set 3 is what of the clients are retained with us. So either we retain cash. The cash came from the client, we've retained it.
Bank guarantee came, we put in the Almira. FD came, we put in the Almira. Now FD is disappeared. So from client point of view, and bank guarantee is only for commodity segment. That will fall in the retained column. So set 2 has to be accounted by 3, 4, 5, 6. Everything is shown set 2. We have to tell the CC where is it lying. Lying with PM, lying with CM, lying with CC. There's no fourth place. So an example, on Monday, client gave 60 rupees cash for NEFT at 8 p.m. And he gave it post the cutoff time for how will you account for it in the system? So financial ledger balance, a clear balance is 60. Now the entire 60 is retained by TM, column 22. Now, friends, the total of column 22, the whatever figure is there, in your bank account, you need to have at least that much money, if not more. So if I say I've got 1,000 clients, I've written 2 crore rupees of all the clients, my bank balance has to have 2 crore rupees, the client bank account or the U account. Actually, D is not counted. Unless there's exception device, there's in D. In S, there's exception, it could be OFS money. In D, there are exceptions, whatever the exceptions are. It's in U. U exception is the cutoff, received after cutoff. Whatever, the money should be visible. For heaven's sake, whenever your segregation file is created, please have a look at it. Look at the rate, column 22, Maro total, and see which bank mein itna balance hai ki nahi hai, so we have some serious problems. It is not a case of misutilization. It could be just poor accounting. Maybe a back office software has gone fat, but at least we should know. We tell the office vendor, he'll say, boss, to nahi ye parameter theek nahi hai, isme theek karo, ho jayega. Because the back office software are pretty stable that way. But please, total of column 22 is critical. So this is when you receive money from client, you can just retain or kuch nahi kar sakte. So that's it. When you receive securities from the client, what do? Either you can retain or repledge. All the securities which are not repledged either to CM or CC will come in this column, column 25, 26, 27. And what are the kind of securities? Approved cash component, non-approved cash component, approved cash component, approved non-cash component, and non-approved security. Those 3 that came from the customer, those 3 are what will be show as retained by us if it is not replaced. If we have replaced, then this is going to be 0. And it will appear further ahead. Either it's lying with the CM or lying with the CC. Similarly with commodities and other collect. We cannot create figures here. Whatever we have received as commodities from the client, whatever received in the other from the client will come here. So set 1, detail, our details. Set 2, what we receive from the client. Set 3, how much is lying with us. So set 4 is how much is lying with the CM. Now this is typical. In case of self-claim member, we are trading members and claim members. So if you are self-claim member, if you retain 100 rupees, have you retained the capacity of a TM or CM? My outlook is you are retaining the capacity of a TM. So if you are self-paying member, the entire set 4 and set 5 will be blank, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 till the end. But if you are a trading member, then you are going to fill set 1, 2, 3, 4 and give it to the professional claim member. The PCM will annex set 5, 6 to it and give it to the claim corporation. So by now it's becoming predictable what to expect. So of all the assets I receive from the clients, I am a trading member, say, and this is what I've retained. The balance is what I've given to CM. I've given you cash, I've given you BG, I've given you FD. Now 31 and 32 again should be 0. Because after the upstreaming cycle, previously the TM used to make a FD and give to the CM, PCM. That has been explicitly clarified again. You can't do it with client money. For own money, you can, but for client, you cannot. So client money, cash to cash, as it is, it has to go. You cannot convert into FD and give it. You cannot put a TM and nobody can put any figure effectively in 31 and 32 on behalf of the client. That's out. It's no longer possible. So please check your segregation files. Maybe you're doing it due to error, due to oversight. You have lots of extra money like यहाँ पे ऐसा report कर दिया. Please have a look. So again example, client gave 70 to TM. TM said 7 मेरे पास पड़ा है 72 to CM he has given. So how do we show it?
Column 9 is the UCC, 10 leisure balance, 11 leisure balance is all clear, clear, clear. 22 is what is retained, and 30 is what is placed with CM. This is a file TM will make and give it to the CM. Now, what CM did with the money, TM cannot come to know. Obviously, the return file will come to know as MIS, but he cannot fill that records. Those records have to be filled by the CM himself because TM doesn't have access to the books of the CM. He was to मेरे पैसे का क्या? The way funds happened, securities happened, approved securities, not approved securities, commodities, and others. This is what would be typically repledged by the TM to the CM. And he would put it, give the data there, keep boss मैंने तुझे दे दिया. Then set 5 is what the CM is appending. Again, SCM is not key of all the money received from the TM. What did he do with it? Either he's retained it and move it ahead. So whatever he's retained, he mentions it here. He TM gave me money, so I've retained it in 38. He gave me bank guarantee, I've retained. He's given me security, I've retained. Whatever it does. Now, most CMs who are very deep pocketed would give their own 1,000 crore FD in advance to the CC and would not give all these things. जब तक देते जब मैं रख रहा हूँ जाके रिप्लेस करने की जरूरत नहीं मुझे आगे देने की जरूरत नहीं. They can do it. Now, interestingly, in the upstreaming circular, upstream was applicable for all PCMs except for bank PCMs. They were considered because they're in the business of holding money. So, column 38, if you are a non-bank PCM, it would be 0. Of course, subject to cut-off. रात के 10 बजे पैसा आया तो कैसे 0 होगा? So, every non-bank PCM के लिए, this is going to be 0, column 38. For bank PCMs, 38 is no problem. If a figure is there, it's perfectly okay. And finally, we come to the last set. There's something else, but this is the main set, is lying with CC. Now, this is the job of all SCMs and PCMs. TMs don't need to bother about this. So, on the money part, column 46 is cash placed with CC, 47 is bank guarantee placed with CC, and 48 is FD placed with CC. So, now, again, please look at the total segregation file. You say 46 mein, you say 10 crore rupees lying with CC. Look in the books of CC. CC बोले तुम्हारा 10 crore cash नहीं, 9 crore 90 lakh. Then how can you say 10 crore rupees CC के उस पर? Where is the 10 lakhs? What accounting mistake have we made? Similarly, we claim that we have given FD of 20 crores to CC. CC says, boss, I'm only 10 crores FD. So how much is the cash part? How much is the FD part is something which has to tally. For example, you may give a lot of cash, less FD, but your back office may giving more to FD, less to cash. Okay? Just check. It's unlikely that's happening. Your back office teams are strong, the compliance teams are strong, but it could be an inadvertent error. It is not a case of misuse of client funds. It's just a case of somebody giving silly reports, which needs to be solved because then it leads to BBF alerts. Check the totals. Every column, just check the totals. So take this example. A client gave 188 rupees to a SCM, out of which 100 was uncleared check. So column 12 is 88. 88 rupees ka hai. Now he says, मैं पूरा CC को दिया. 80 cash, 8 FDR. So this is what his thing will look like. Account type 7, 8, 9, 10. Now 11 is the clear balance. 88. All right, because वो बाकी uncleared receipt है 53. Out of which बोले भाई मैंने कुछ रिटेन नहीं किया. 0. CC को मैंने 80 रुपया कैश दिया है और 5 रुपया FD दी. 8 रुपया FD दिया. This is how the file will tally. Now, can it be BG 47? In the past, it was allowed. But then in 2013 SEBI circular, it was clarified that you cannot use the client's money to make FDRs and then give BG. Because then 47 BGs are, then cash components are, stuff like that. That is out. So 47 for clients is going to be 0. If it is non-zero, we are in trouble. Because there is something wrong with the back office reports. Please check. So every column there is a story. ये होना चाहिए. 47 has to be 0. After, in 2022, 47 did not need to be 0. 2023 it needs to be 0. No, 24 definitely. 23 beach में आया. Now,
This is the funds placed with CC. So all the client money which is lying with there. And if you're SCM, it's not lying with you, it's not lying with CM, it is lying with CC. Either it will be cash FD, it can't be something else. So there was lots of private arguments I had with members. ये तो FD बन के cash बन के FD बन के BG बन के कुछ हो गया. This is how it is controlled. There's no way that system has any loophole there. Similarly, place with CC's money के अलावा non-money is approved securities, non-cash, approved securities, cash, and commodities. What about not approved securities received from client? Was that option because it's not approved, CC can't accept it, so they'll not even put a column there. Now, a bit of a segue. I am talking about column 40 and 50. Now, it's very nice to create a segregation file. How do we tally it? Because exchange gives a file auto allocation of securities value. That and our figures will never tally. Our valuation of securities is on price of T-1 and VAR of T-1. Okay, that's just for the purpose of getting stability and continuity to the client. Predictability. Boss, your value is worth this and doesn't change during the day so that the client experiences smooth. But CC is totally focused on risk. They are going to change the VAR. They are going to change the prices. They'll have their own valuation methodology. They also have prudential limits. So for the securities that you believe is worth 100 in books of CC is worth 5 rupees. Why? Because prudential limits it. I will not give you more than 5. So this example again to make a point, a client gives a pledge as a margin pledge. He gave me 100 rupees worth of market value, which after T-1 closing tells VAR, I think the value is 90. Half the securities I have repledged to CC. Half I did not repledge. Okay, no problem. Now CC gives a return allocation file. He boss client the security revalue. But CC बोलता है for me the value is only 10 rupees. Why? Because prudential limit hit, member wise, market wise, whatever. How do I report in the segregation file? This 10 means nothing from segregation point of view as on today. So it will go like this. Column 9 would be client code, of course. Column 15, sorry, I've got I've put the cash component, it's a mistake. So it will be non-cash. Please read it accordingly. So non-cash component that I've received from my members is from my clients is 90. Then out of which 45 retained and 45 plays with CC. Now in 34, I've said 45. CC says only 10. That's CC's problem. Maybe in the future, they'll break up 34 into 34A, 34B and say, ki boss, break 45 into kitna tujhe diya, kitna bach gaya. But that's till such time, we have to give 45. We cannot put 10. If we don't put 10, we cannot even tally it with what the actual allocation file came out with. But this is the situation here. So that is set 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, when the new circular, new changes came, they also introduced this government securities. Now, I have not put it there because government securities through e-Kuber. Now, either you can give government securities through margin pledge repledge mechanism, which is beautiful. But if you do through e-Kuber, then it is a different. It is used SGL and all that, and it is used only by very serious players. So they know how to figure it out. But these are the columns 54 to 58. Actually, they're part of set 2, 3, 4, 5, 6. So to reduce complication, I've not put it there. And this is all the government securities outside the pledge repledge mechanism. There's some more MIS data being collected in the segregation file. 59, 60, 60, bank guarantee. So whatever is shown bank guarantee, the funded kitna, non-funded kitna, CM level, CC level, it is they have asked for this data. This data was relevant when client funds could be given the client funds could be made FDs, could be made BGs. That's out. So frankly, this data is now applicable only for the pro FDs, pro BGs. अब pro BGs में ये funded portion का data लो नहीं लो उसकी कोई value नहीं because it's my money. Okay? So it seems like these are legacy columns and it gives some MIS which is of not too much of a significance. So probably in the next review, whether this remain or not will be a regulatory call. If they ask the standards forum, we'll give a feedback. But this is what this is on funding data. But please be careful. Clients' money cannot come in the BG.
And there's a couple of miscellaneous columns. One is the settlement amount. This is again a MIS, and this was when there was a Friday settlement. So logic was if you try to settle on Friday, but कुछ गड़बड़ हो गया, बैंक को सबमिशन किया लेकिन बैंक ने उसको प्रोसेस नहीं किया, बैंक प्रोसेस on Saturday and so on and so forth. All such figures you are supposed to report in 63. That is the amount of money you released on Friday, but it was debited on Saturday, and put it here. Right? Again, in light of the fact that now we can settle over Friday and Saturday, this column 63 again has become redundant. And ideally, this should be zero. अरे सिर्फ फ्राइडे को भी फेल हो गया सैटरडे को भी फेल हो गया ऐसा नहीं होता this is there's something wrong with our offices. So that's 63 for you again, in my opinion a legacy, now a legacy, just became legacy in the last settlement or on that Saturday. Then finally the last one is 64, unclaimed unsettled client funds. uh, Before upstreaming it said you could keep it in a separate bank account and then mark it here. Now they say no, it has to go to CC and allocate it then. And still, for the purpose of checking whether settlement work in, you have to put a flag, a yes, no. If he says this is the money lying with me, which is out of unsettled thing, so the alerts will not get generated. Otherwise, CC will say इसका 100 रुपया जमा है, तुमने दिया नहीं, settlement निकल गया. Show tell me why. Show cause. But 64 में फिर से yes, it's unsettled वाला matter. तो CC will say अच्छा unsettled वाला matter है, तो मैं तुझे तक नहीं कर. CC और MI are the exchanges the case. Logically, when I was speaking to one of the MIs, they said those such clients should ideally be inactive in the UCC system, or maybe even closed. नहीं करना काम है तो. Closed is a bit too much, but inactive definitely. If you can't trace the client and still active in the UCC, that seems a little off and illogical. There are some 10 webinars on which I've talked about this, but I cannot stop talking about it. This is just band mismatch. Whatever we show as lying with CC, cash and FD lying with CC in the segregation file, that has to be the minimum allocation to the client in the allocation. So if I say client in the segregation file on Monday evening, I say ki client gave me 100 rupees, it is lying with CC in the form of cash. I fill both the columns, very happy. Now it is lying with CC, but is it allocated the name of the client of the CC? When I check, no, nothing allocated. Boss, ye kya? The SEBI circular of June 2021 clearly says that if you show anything placed with CC, then that's a minimum allocation. So please get your ledger-based allocations in place. Just don't leave it unallocated. Don't just leave it here and there. Don't be serious about this thing. There's a minimum allocation that you need to do from set 6. What you show in set 6 has to be the minimum allocation. And then there's also maximum allocation. Whatever is shown in set 2 that you can allocate. For example, early payment capacity, you can allocate. Though there's nothing lying with CC, early payment is kind of notional, but that is you're allowed to allocate and you're expected to allocate to save penalty. So this band mismatch, I believe one CC is doing, I'm not sure about the others, but please, this is very critical. Please audit your systems, ask your interpreter, ask your back office guys to tell you how your office is functioning and how their offices, how you can take care of that. There are two common mistakes which come repeatedly. Like the error, people forget to allocate. Okay. Now, before you put trades in order, move trades to error, now you're going to move. So please allocate. रह जाता है. नहीं रहेगा because नहीं रहना चाहिए. Just allocate something. Allocate out of your pro, but please allocate. That's what's the request of the MIs. And remember, if you are a member of multiple segments across multiple client corporations, even same client corporations, the client ledger balance has to be divided across the subgroup. So if a client is 100 rupees credit, I cannot report to MSEC CCL ki iska 100 rupees jama and NCCL and NCL and ICCL ki bhaiya 100 jama hai. Because in the books iske 400 jama ho jayega. Because they're going to consolidate it. If you have any kind of, for example, you've allocated 25, 25, 25, and 4. So please show ledger balance 25 and lying with CC 25 and there's an allocation there. If you're not, please show 100 only in one CC. But you have to divide the ledger credit into various segments. Typically, it's inter-op, so segment-wise. And in case of commodities, of course, we have multiple. You have to divide it and accordingly report it. Please don't do double. You're just
confusing the system and giving wrong alerts. Your wrong data is leading to alerts, then alerts have to be closed, सबका काम बढ़ता है. एंड होता क्या, गलत अलर्ट्स आते हैं तो फिर जो अलर्ट्स को पकड़ने चाहिए वो भी ओवरसाइट थोड़ा दब जाता है. So this is about segregation file. We've kind of I've tried to touch upon it. Please, today evening when the segregation file gets created or yesterday's segregation file which we uploaded, प्लीज बोले भैया एक्सेल में खोल के तो देखो अंदर क्या है. सैंपल 4-5 क्लाइंट को उठा के देखो क्या है. जस्ट चेक, हैव सम अंडरस्टैंडिंग. प्लीज एवरी कॉलम मारो टोटल. सी बॉस, does this total make sense? You know your creditors in the office are 10 crore rupees. You मारो टोटल and say कि बॉस यहाँ तो खाली अब तो 3 crore creditors है. There's something seriously wrong. और there's 50 crore से creditors, even that is wrong. ठीक है, it has to tally. 2-5 रुपए का फर्क होगा, राउंडिंग का फर्क होगा, that is वो भी नहीं होना चाहिए, बट वो तो फिर भी समझ में आता है. But then dramatic difference between what your actual back office is and what is being uploaded to the regulatory authority, the our SROs, self-regulatory first line regulator, whatever you want to call them, is something which is very serious. And even though your intentions are good, ठीक है, suppose you give wrong data, people come and check and say नहीं नहीं तूने client को misuse नहीं किया तो अच्छा इंसान है. But the fact is you have no control over your operations. तुम्हें पता नहीं तुम्हारे ऑफिस में क्या हो रहा है. ठीक है, कोई भी फाइल बन रही, कुछ भी जा रही है, दैट इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग. इफ वी कांट कंट्रोल ऑपरेशंस, आज सब कुछ सही है, कल कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा. सो प्लीज प्लीज रिक्वेस्टिंग यू टू keep an eye on that. So as is the practice, we can all raise electronic hands and members can ask questions and we'll try to answer it. All MIs are here and they're usually very happy. बोले उत्तम ने तू ही जवाब देते, but we catch them when we need to catch them. And before we open them to people at large, would any MI would like to add, subtract, amend, flag some point? This would be a good time if we can leave it. Or some common questions, you know, आने वाला है, if you can preempt them. Over to you, or we can go to Q&A. उत्तम सर, may I? हाँ जी. Yep, no MI has volunteered, so Wispy, over to you. Yes. Nitin ji, your question, please. Kindly there. Yes. Nitin ji. Nitin's mic is not Okay. working. The question from BM 4586667, please. उत्तम सर, नितिन बात करो. हाँ जी. हाँ नितिन. सर ये पिक फाइनेंशियल लेजर बैलेंस सी के ऊपर आपने बताया नहीं. टिपिकली पीक के बारे में क्या क्वेरी है? जो पीक बैलेंस आपको को दिखाना है, जो यदि आपका नेगेटिव बैलेंस है, मतलब द लीस्ट नेगेटिव बैलेंस, वो दिखा दो. या देखो, बिकॉज पीक मार्जिन दे विल कंपेयर विद द क्या कहते हैं, पीक मार्जिन ऑब्लिगेशन जो आएगा वो उस कॉलम से कंपेयर हो जाएगा. उसमें कोई कंफ्यूजन बोले तो अलर्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं जैसे से. अलर्ट्स बहुत आ रहे हैं फॉर पीक मार्जिन. एक्चुअली इसमें खाली एक थोड़ा डाउट मुझे भी था कि एक तो पीक मार्जिन में वो लिखते हैं क्लियर. ठीक है, तो क्लियर पीक दिखाएंगे तो उसका अलग स्टोरी बन जाता है, क्योंकि यदि क्लियर पीक करेंगे तो जो चेक आया वो भी गिन नहीं सकते. तो वही तो कंफ्यूजन है. नहीं उत्तम जी, चेक तो ऑलरेडी सेपरेट कॉलम है, तो हम ऐड करते हैं पीक में. अच्छा, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है. और उसके बाद जो ईपीआई है वो भी अलग कॉलम है, वो भी ऐड कर लेते होंगे. तो क्या तो आपके हिसाब से कोई ऐसे 2-3 गलत अलर्ट आए जिसको लेके आप कंफ्यूज हो गए? सर ये बिल का इशू आ जाता है. बिल का? हाँ, कैश का बिल हमारा हम रिवर्स करते हैं डेबिट वाला, क्योंकि हाईएस्ट क्रेडिट पकड़ते हैं ड्यूरिंग द डे. सेटलमेंट डे पे हाईएस्ट क्रेडिट पकड़ते हैं, तो उसमें इशू आ जाता है, क्योंकि डेबिट वाला बिल तो कंसीडर नहीं होगा फिर. हाँ, तो हाईएस्ट क्रेडिट पकड़े तो आपको अलर्ट तो आएगा नहीं, उल्टा आपने ज्यादा दिखा दिया फिर. नहीं, अलर्ट तो आ रहे हैं ना, वही तो आ रहा है. नहीं, देखिए सर, अभी 1 मई से पीक मार्जिन अभी बीओडी पैरामीटर्स पे आता है सीसी का MG13 में. और दूसरा चीज ये था कि पहले जब कैश मार्केट का T-1 डे का जो बिल आज सेटल होना है उसका भी मार्जिन फर्स्ट स्नैपशॉट में आता था. तो उसके लिए जो पीक
आपका बिल जो है वो रिवर्स करने का जरूरत नहीं था, जो आज सेटल हो रहा था उसमें अगर कोई डेबिट था तो आपको ऐड करके रिपोर्ट करना था। बट मई 1 से सीसी ने बोला है कि कोई भी जो बिल आज ही सेटल हो रहा है उसका किसी भी स्नैपशॉट में मार्जिन नहीं आएगा। तो बेसिकली जो भी आपका मार्जिन है आप समझिए कि आपका बिल सेटल्ड हुए हैं उसी पे आएगा, इसलिए हमेशा ही आपको अब जो भी क्लियर लेजर बैलेंस है वो ही कंसीडर करना है और उसके बेसिस पे थ्रू आउट द डे आपका कितना हाईएस्ट रहा है उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना है। तो इधर तो कंफ्यूजन है सर, थ्रू आउट डे में क्या हो जाता है सर, डेबिट बिल मेरा नीचे आ जाएगा, क्रेडिट बिल ऊपर जाएगा। जैसे समझो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज देखिए क्रेडिट है। सर एक चीज सुनिए कि आपका 7 फरवरी को कोई चीज आप मार्जिन कंप्लाइट थे, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, 7 फरवरी तक आप कंप्लाइट थे, तो 7 फरवरी तक के जो मार्जिन थे वो 8 फरवरी को तो खत्म हो जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में ही सेटलमेंट हो जाता है। तो करेक्ट। मार्जिन भी जब उसका सेटल हो गया तो बिल भी उसका डेबिट होगा ही ना। आप समझिए आपने 10 लाख का कोई 7 फरवरी को माल खरीदा। नहीं, आई चेंज द एग्जांपल अ बिट। हाँ हाँ आप अनक्लियर्ड चेक पकड़ रहे हो, ईपीआई का इफेक्ट पकड़ रहे हो, करेक्ट? राइट। हाँ। तो नितिन भाई, एक एग्जांपल से बात करते हैं, आसान होता है। मंडे को एक आदमी ने आपको 100 रुपए का चेक दिया, ठीक है, और मंडे को 100 रुपए का माल ले लिया। तो मंडे का उसका लेजर 100 है, पीक क्लियर वियर सब कुछ 100 है, ठीक है नितिन भाई, यू विथ मी? यस यस यस। अब अपने ट्यूसडे सुबह आते हैं। ट्यूसडे सुबह में और मंडे शाम को जो सेग्रीगेशन फाइल लोड करेंगे तो सब कुछ बराबर चल जाएगा। ट्यूसडे सुबह उसका डेबिट हो गया, ठीक है, सपोज अपने डेबिट हो गया, उसका लेजर जीरो हो गया, उसने कुछ नहीं किया, शाम तक 0 0 0 चला। अब आपको, अब उसको नया काम करना है, तो यदि उसको कुछ पैसा देगा, माल देगा, तो ही वो नया काम कर पाएगा। तो आप, या तो आप जो बेसिकली पीक का अलर्ट तभी आएगा जब आपका, आपने जो पीक में रिपोर्ट किया और जो पीक मार्जिन है NG13 में, या फिर जो सेम एज एलोकेशन वाला फिगर, उसमें फर्क आया। तो या तो आप जो आपके बैक ऑफिस से जो पीक मार्जिन का फिगर रिपोर्ट हो रहा है उसमें शायद कुछ लॉजिक में एंगल है क्या कुछ? तो उसमें लॉजिक में बोले तो सर वो क्या होता है, जो डेबिट वाला बिल होता है वो कंसीडर नहीं करता है। आपका बैक ऑफिस वाला? यस। सर एक काम करते हैं, इसके ऊपर छोटा सा नोट बना के, मैं पीक मार्जिन के अंदर क्या रिपोर्ट करना है उसके ऊपर एक छोटा सा नोट बना के विल जस्ट ट्राई टू सर्कुलेट इट विद द हेल्प ऑफ सीसी। हाँ, तो यस। उसे इस चीजें एक्सचेंज, तो शायद उससे क्लैरिटी आ जाएगी। सी, अलर्ट तभी आता है जब जितना मार्जिन ड्यू है उससे कम आपने उस फिगर में दिखाया, ठीक है। अब आपने कम क्यों दिखाया, तो क्लियरली इट्स इंटरप्रिटेशन इशू बाय द बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर, करेक्ट? क्योंकि अपने हाथ से तो बनाते नहीं, बैक ऑफिस ने जो बना दिया घुस गया अंदर। बराबर। तो विल वर्क ऑन दैट। ओके। और सर ये ड्यूरिंग द डे अगर मैं इंटर एक्सचेंज जेवी मारता हूँ तो उसका कंसीडरेशन कैसा करना है? ड्यूरिंग द डे इंटर एक्सचेंज जेवी मारते हैं द बैक ऑफिस, यस। इंटर सेगमेंट, इंटरसेक्ट। तो क्या कंसिडर करें, मतलब क्या जोर आ रहा है उसके अंदर, तो वो उसको पीक हाईएस्ट में पकड़ोगे नहीं? पीक में पकड़ना है या नहीं पकड़ना है? आप वापस पीक पे आ गए, मतलब पीक वाला टॉपिक आ गया अपना। पीक वाला ही सर सबसे मेन है। अच्छा ठीक है सर, तो पीक पे सर ये भी क्वेश्चन में नोट कर लिया, इसका ऊपर भी ढंग का क्लैरिटी ले आएंगे। ये मुझसे गलती होगी, पीक के ऊपर मैं आयुष उस पर ज्यादा होमवर्क करके सबमिट नहीं किया, बट आप कह रहे हैं कि पीक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। ओके। और सर और एक था, ये ईपीआई के लिए डीएम डेट फाइल यूज करना है या ईपीएन का जो फाइल आता है वो वाला लेना है? कैन एम आई आंसर दिस क्वेश्चन? द EPI figure, what number should be taken? Uttam sir, next one. No, this question is still pending. DM DAT या फिर EPN फाइल, कौन से CC की बात है ये? आईसीसीएल। Okay. ICCL, the question is in case of early paying done in ICCL, the early paying figure value, should we take the DM DAT figure or the EPN file figure? Correct, नितिन भाई, ये सवाल है? यस करेक्ट। Can you clarify DM? What you say? DM DAT, DM DAT file और EPN file. ठीक है, वो because the So, security. okay, Yeah. तो पूछ लेंगे, पर नितिन भाई लॉजिकल ये है कि जो क्लाइंट ने जितने रुपए में माल बेचा
ट्रेड वैल्यू, ठीक है, उसका 80%, अप टू 80%, आप चाहे तो खाली 20% भी दो, आपकी इच्छा है, ओके ठीक है। टेक्निकल कानून ये है। क्लाइंट ने 100 रुपए का माल बेचा, फिर एक्सचेंज के जो भी फिगर है, ठीक है, आपके यहाँ ट्रेड कितने में हुआ? 100 रुपीज हो गया, 100 रुपए में ट्रेड हुआ, ठीक है। 100 रुपए जिस भाव में आपका बिका, उसके उसका अप टू 80%, 100 रुपए में बिका, तो आप चाहे 80 रखो, 70 रखो, 60 रखो, 10 रखो, 0 रखो, आपकी इच्छा, ओके अपनी इच्छा, मतलब टेक्निकली। ठीक है हाँ थैंक यू सर, आई होप दैट हेल्प्स। हाँ Jitendra ji, your question, please. हाय उत्तम जी, मेरा ये क्या है बोले तो, अब जो हमारा लेट नाइट जो क्रेडिट्स रिसीव होता है रिटर्न टू यूपीआई नेफ्ट कुछ भी वो कौन सा कॉलम में रिटेन विद टीएम। रिटेन विथ है अभी तो, लेकिन हम तो क्लियर कैश है ना, सो वी आर डूइंग इन क्लियर कैश। व्हाट उसका इज क्लियर बैक कैश? ऑफिस, नहीं बैक ऑफिस में वो फैसिलिटी बनवाना है क्या, No, कुछ no, टाइमिंग no, का कट ऑफ? no. So, yeah, that is our back office has to handle it. But I'll open this sheet, and Yeah. if your money comes, it is column number 11 no, yeah, it will go in 22. 22 Any money received after cutoff time ओके would go in 22. ठीक है Can go in 22. So, for example, suppose the cutoff time is say 5 o'clock. Money came at 7. हम्म ठीक है, allocation is still open, ओके and you have some extra money given in advance. You allocate to the client, ठीक है। then that fellow's trade becomes lying with CC. नहीं, if my excess amount is lying with CC, I can allocate, right? You can say straight go to 46. But if not, you have the option to keep it at 22. 22 okay Yes. It's always nice to speak the column number. okay Yeah. Hope that clarifies your question. yes, so I can allocate in the FD also, like if I have Yeah. yes Yeah. Well, because you can allocate in either 46 or 48. You cannot allocate to 47, huh? Just be careful. yeah, 47 is not And some people by mistake, see, they have extra FD lying, but uh-huh. while loading the file, they upload in extra 48, they load in 47 okay because of sheer ignorance. mm-hmm. So the whole idea is to avoid such avoidable mistakes. So we need to keep a cutoff timing, like post 7, whichever credits we are No, receiving should be it's post 5, you can put any time. For example, my office cutoff time is just 7. cutoff time. My office is 7:30. Okay. If and suppose my staff has left early today, okay, till 6 o'clock. Okay. So it should be unique. I mean, it should be any time between. See, CC cutoff time is allocation file time is 8 o'clock. 8 o'clock. The regulatory cutoff time is 5. Yes. So depending on your office practices, anything between 5 to 8 should would be a nice practice. Nice. The more near to 8, the better. Okay. Maybe we can ask the CC to keep allocation open till 12 o'clock in the night. Okay. But that we're just training the system for no rhyme or reason. Sure. Yeah, Love all it. right. Yeah, thanks. और अभी आप अपस्ट्रीमिंग के सर्कुलर के बाद अगर आप एफडीआर रिटेन बाय टीएम में दिखा रहे हो तो हाँ। वैसी पॉसिबिलिटी कम होगी बिकॉज नहीं, एफडीआर रिटर्न में टीएम की बात ही नहीं है सर। बिकॉज नहीं 48 भी बोला था ना, 48 इज एफडी प्लेस विद सीसी। ओके फाइन हाँ। ओके इसलिए मैं स्क्रीन खोल लिया सो दैट लाइफ बिकम्स इजियर। हाँ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Mitesh ji, your question, please. Mitesh ji. Hello. हाँ मितेश भाई। Yeah, we have question about the MTF cash collateral. Okay. Suppose I will give you the example. Yeah, I'm aware. MTF cash collateral also the current stand taken by CC. This is this matter is under discussion at IPF. We request for a review. They are saying that we're talking about 65. Correct? Correct. So column 65 में whatever cash collateral you have put, we are required to show it as a part of 10. Clear? No. 10 and 11. 11. हाँ, correct. 10 and 11 of the non-MTF ledger. ठीक है? And then all hell breaks loose. Because then where's the money? Your entire funds balance goes out of track. So this is under discussion. We have requested a review, but till such time, whatever action circular remains. Okay, fine. But seriously, we have the serious discussion on review of the current interpretation by MIS.
The 10, second question, 10, 11, 12 लेकिन तीनों for the main हाँ चीज 11 है actually. हाँ मेन 10 चीज and 10 हाँ and 12 are MIS actually. राइट okay. Hello. Not strictly MIS, but yeah, just loosely speaking. Yeah, Nitesh bhai. Any Yeah, other question? yeah. The second question about the haircut. Generally अभी क्या होता है? See, like there Haircut are for? for non-cash securities. Okay. Okay, there are two types of haircut. एक वार है and the second is एप्सेक भी है. Okay, so जो CCs है वो तो एप्सेक से लेते हैं haircut. Okay, and there are some broker like we also हम लोग वार पे लेते हैं. So we are in what CC clearing and FNO. Okay, we are PCM clearing. तो इन सच केस क्या होता है, हम लोग वार से जब PCM को फाइल देते हैं ना, दे आर रिजेक्टिंग आवर फाइल सेइंग कि आपका जो हेयर कट है दैट इज मिसमैचिंग विद आवर फाइल. लाइक क्योंकि अपना अपना जो वैल्यूएशन होता है, लाइक जो सिक्योरिटीज का है दैट इज ऑन वैल्यूएशन. तो जो वैल्यूएशन पीसीएम कैलकुलेट कर रहा है और जो वैल्यूएशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें मिसमैच आ जाता है. Understood. तो अगर इफ वी सजेस्ट कि एनी सिंगल हेयर कट लाइक आइदर वार और आइदर क्या एब्स्ट्रैक्ट, तो ये जो मिसमैचेस जो है और जो हम लोग को मैन्युअल वर्क करना पड़ता है टू मैच विद द पीसीएम इन केस ऑफ पीसीएम क्लियरिंग, तो दैट विल बी क्लियर ना. बिकॉज क्या होता है, अच्छा मैं आपको टोकता हूँ एक बार बीच में. हाँ, सर हाँ. देखिए, हाउ मच हेयर कट टू कट, ठीक है, is a discretion of the member based on his policies. Correct. With the only restriction, it cannot be less than VAR. ठीक है. सो आपके ऑफिस में आप कर सकते हो कि भैया मेरे यहाँ तो 1.5 टाइम्स VAR में करूंगा हेयर कट. ठीक है, आप अपनी पॉलिसी बना सकते हो एज अ ब्रोकर, कोई हर्जा नहीं, अपना रिस्क मैनेजमेंट करने का राइट है. तो आपने बना रखा है कि जो भी अप्रूव सिक्योरिटीज नॉन कैश कंपोनेंट मुझे आएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट 16 राइट, वो मैं कल के क्लोजिंग प्राइस और कल के वार से काटूंगा और मैं उसका वैल्यू निकालूंगा. जब आप ये निकाल के और आपका फिगर आता है सपोज 100 रुपये, फिर जब वो फिगर आप देते हो अपने पीसीएम को, पीसीएम के या तो 101 आता है या 99 आ रहा है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट पे जा रहा है. हाँ, तो उसके अंदर पीसीएम एकदम कंफ्यूज हो जाएगी बॉस क्या हो रहा है. करेक्ट करेक्ट. करेक्ट करेक्ट. तो बेसिकली जहां तक मैं मानता हूँ ये आपका पीसीएम का प्रॉब्लम है, सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं. यदि आपका पीसीएम एक पर्टिकुलर ढंग से काम करता है तो आपको अपने पीसीएम, यदि आप टीएम है तो आपको अपने पीसीएम के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा. पूरा मार्केट आपके हिसाब से मॉडिफाई नहीं हो सकता. ओके. Am I correct when I made these statements more or less? I need a yes and a no because it's a strong statements I've made. Sir, could you repeat your? Yeah, I'll make the statement ki when I put in 16, when I say approved securities, non-cash component received from client, and I value it, it is my discretion as per my margin policy what to value it. That number, obviously, I can have my own haircuts. It can't be less than VAR. I have to take T-1 price. I have to take T-1 VAR. But my office can say ki I'll take 2 times VAR in my office because I'm more conservative in terms of risk. So you can be conservative, but we have said that I think in one of the FAQs we said that it has to be CC haircut is what you need to do it, but definitely you can be for the conservative. purpose of 16? Generally for valuation is what we said. No, for the purpose of reporting value in 16, okay, which is right in front of the screen. We want, this is a number generated by what is the value of these securities. It is a number I'll decide. Okay. And that number is depending on my margin policy. And it will be T-1 pricing and T-1 VAR rate. Because I'm giving limits on that. So suppose T-1 VAR rate is 26% and value is so and so. So based on that, I've given limit to the system. Now suppose CC says, no, my rate is 26.8. One of the CC says. And you said, then in that case, I'll get a margin shortage. Then I'll get an alert ki boss, you have not collected margin on the clients. So this number has to be my number.
Is that a correct statement I'm making? If I'm wrong, please, I would really like to know this so that we can market or CCs are calculating some rate and number, वो CC का convenience है. But what limit I give to my clients as a broker is the number I'll put in 16. And once I put the number in 16, then all other numbers flow from 16. इतना clients आया तो इतना plays with CM, इतना with CC, blah, 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 blah. Yeah, because even the band mismatch and all, we take from the value what you report. We don't 16. apply. So Yeah. 16 is my call, right? Or subject to minimum given by regulatory authorities. Yeah. Regulatory authority minimum T-1 rate पे T-1 का VAR rate is the minimum given by you. Wonderful. ठीक है उसके I can have higher than I can have a higher haircut, I cannot have a lower haircut. But if I follow that number as it is it non-compliance if I put that number in 16? I believe it is not. Only one, yeah. So what the thought is coming is, suppose that you got say 100 crores worth of stock from one client, and if you get 99% as a haircut, so what you will show in the report is only say 1 lakh. Yeah. So it may be seen as a undervaluing the what collateral you are having from the client. So correct. that is the only concern that is coming here. Correct. But sir, given the fact that everything is pledged, repledged mechanism, security side में frankly no problem. But okay, whatever. In that case, my member query is 16 में क्या rate लगाना है? Either he said, give me a uniform practice in the market, right, sir? आपने यही बोला ना? Yes, yes. हाँ. You either CC give me a uniform practice, happy to do it. मैं कह रहा हूँ CC uniform practice देने वाला कौन? Because this is the figure, this is limit I am giving to my customer. Based on the uniform practice is already T-1 closing in T-1 VAR or higher. And आयन जी यदि मैं बोलूं कि यार मेरे ऑफिस में मैं 3 times VAR काटता हूं तो किसी ने 25% नॉर्मल VAR है मैं 75% काटूंगा. You want me to I should put the limit that I am giving to a customer na as per my RMS. If no, then we need some kind of policy input. We need a clarification. But logically, when segregation file is going to be the base file to monitor all alerts, all everything, then it has to be as per my policy. It cannot be uniform logically. So something सोचने वाली बात है. मितेश भाई, very good point raised. सब सोचने लग गए. See, just a top up on this point. The current practices, for example, I have 10 shares of Reliance, which is valued at 100 rupees at CMP. CC would cut 20% off. It gives me a value of 80. However, I go for a VAR haircut. So balance amount, can I show it in retained with CM? Because that will match my exact amount. So that the whole concept of retain with C cannot retain with C, sir. Retain with CM एक अलग चीज है. Retain with TM to correct myself. Sir, retain with TM भी एक अलग चीज है. आपने पूरा शेयर आया, पूरा रिप्लेस कर दिया, आपके पास कुछ रिटेन नहीं है. Agree. हाँ. So either we'll have to create some other column next time when they review the. You have to create a file की boss ये whatever by whatever name called. Till such time, sir, आपने question raised किया. I'm sure there's no answer to this question, but this issue is flagged very well with all the seniors. So probably we'll have some clarity soon. Only thing is, currently till the time of final conclusion. Then you have to take higher of 2. Basically, जो आपका PCM बोल रहा है कर लो यार. Okay. It is your policy. You can have a higher rate, right? So go as per your PCM. अपने ऑफिस का system change कर दो. The only thing is when exchange takes it on margin reporting, that will be a mismatch, and that is where the problems would come. Exchange, see, तो but AppSec के हिसाब से report करें. But it has to be higher up to. It can't be less. Yeah, on a conservative side, yes, agree. Thank you. हाँ. पता नहीं मैं आपका जवाब दे पाया कि कंफ्यूज कर दिया आपको, बट ठीक है. एक्सचेंज हम जो अलर्ट जनरेट करते हैं एक्सचेंज की साइड से, we consumed only the ledger balances, the segregations. As far as the securities are concerned, we directly do the valuations and we take it from depositories. So exchange will not send any alert with the valuation what you have reported in the segregation. Okay, that's helpful. Thanks for the clarification. तो 16 नंबर बेसिकली आप हमसे नहीं लेते, आप डिपॉजिटरी से सीधा ले लेते हैं. मोटा मोटा. राइट. एंड हम वैल्यूएशन भी अपने हिसाब से करते हैं. T-1 वो सब खुद ही कर लेते हैं. Oh nice.
Durgesh ji, your question, please. Durgesh ji, please unmute yourself. तो वही 16 नंबर अपलोड करना बंद करवा दो ना नरेश भाई। सर दुर्गेश कलिया, मेरा क्वेश्चन केस रिटन बाय टीएम से रिगार्डिंग है। एग्जाम्पल जैसे मेरा सेगमेंट नेट क्रेडिट है 800 रुपीज का क्लाइंट का क्रेडिट है, जिसमें से 1000 रुपीज क्रेडिट है एफ सेगमेंट में और 200 रुपए डेबिट है सीएम सेगमेंट में। अब मेरा सिस्टम क्या करता है सर, 1000 रुपीज क्रेडिट क्लियर क्रेडिट कॉलम में दिखाता है एफ में, और 200 रुपीज रिटर्न दिखाता है, और 800 रुपीज का कैश प्लेस विद टीएम दिखाता है, और सीएम सेगमेंट में 200 रुपए डेबिट दिखाता है। तो उस केस में बस रिटर्न रख सकता हूँ क्या सर मैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये या तो जेबी मार के एक लेजर जीरो करो, मतलब इंटर सेगमेंट बैलेंस ट्रांसफर करो, ये काम मत करो बॉस। ओके ठीक है, बिकॉज आप गलत सी आप समझो, सीसी क्या करेगा, एक्सचेंज क्या करेगा, एमआई क्या करेगा, बोले रिटर्न में टीएम का टोटल मारेगा कितना है 10 करोड़, पता बैलेंस क्या है, सब बैलेंस तो नहीं है, कहाँ गया, फिर बैठ के समझाओ सर देखो ये यहाँ डेबिट था 200 दिखा लेके वहाँ क्रेडिट था, ऐसे करके तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो ये अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं है। बात तो सही, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, खाली चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग राइट वी आल्सो नीड टू बी करेक्ट सिंपल। करो तो। हाँ हाँ नमस्ते सर। सर एक क्वेश्चन होता है, ये जो 8 बजे बाद जो फंड आता है हाँ उसको हम कैश रिटर्न पीएम में दिखाना है या बिल्कुल, नहीं दिखाना इधर है? इधर 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 अभी भी यही जवाब दिया था, फिर क्लैरिफाई करता हूँ। जो रात को लेट आया वो 22 नंबर में डाल सकते हैं, 22 नंबर वो जो स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक ना है मेरे। हाँ हाँ ठीक है सर। यस हाँ सर। हाँ हेलो, हाँ बोलिए सर। एक जैसे केस रिटर्न बाय टीएम में मेरे को क्या करता है, एक क्लाइंट का से 8 बजे बाद पैसा आया लेकिन उसको रिटर्न नहीं रखता है और दूसरे क्लाइंट का रिटर्न रख देता है, तो उस केस में सर? तो फिर अब बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर को पकड़ो, उसका कान मरोड़ो, बोलो बेटा इसको ठीक कर, मेरे को ऑप्शन दे वरना मरूंगा। जिस क्लाइंट का लेट आया उसी का रिटर्न रखना, बाकी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिकॉज अभी सॉफ्टवेयर क्या रैंडमली एलोकेट कर रहा होगा, यस सर यस सर। वो रैंडम उसको बोले रैंडम रैंडम एलोकेट नहीं, मुझे मार्किंग का ऑप्शन दो। डेट्स मीन जो अपस्ट्रीम अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा रात में वो कैश रिटर्न में टीएम से टेली होना चाहिए। या अपस्ट्रीम में कैश रिटर्न में टीएम से ज्यादा पैसा होना चाहिए, ठीक है ठीक है। इक्वल या मोर, इट कांट बी लेस बस। हाँ हाँ Sanju ji, your question, please. Hi, am I audible? yes please. Okay, so hi, thank you for holding this, Uttam sir. I think this is good initiative. So I had question related to column number 20, where EPI credit is reported. So we are a member who follow T-day billing system. Ouch. And yeah. So the value that we report in the EPI column is the 80% of the actual EPI that is done to the depositor. However, we are receiving alerts from the NSE for false margin reporting, where it claims that, so if I were to quote an example to make it clear, say when customer sells a stock worth 100 rupees on any day, there is a peak margin of 20 rupees captured against that sale transaction. And there is an EPI done subsequently at a depository level, and the remaining 80 is allowed to trade in any of the segments. So assume the customer takes a stock B trade where margin blocked is 80. Any subsequent snapshot captured or maybe at the same time where it shows up So the it's peak 80 margin plus as 100. 20. 100. Uh, Margin reporting, we consider it as 100 and we just complete the reporting. However, the segregation reporting is done up to 80%. So there is an alert being generated. You want to understand how this but can usually be. if this alert is generated when you give answer, I'm sure you have not been penalized. You're not being penalized, but these so are... basic alert is not a bad thing. Alert doesn't mean you're guilty. Alert means CC से MI says कि बॉस ये क्या हो रहा है, प्लीज समथिंग, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, जब बताना क्या है, एंड इफ यू से ये है, अच्छा ठीक ठीक है। No, but these alerts are being generated very frequently for all the trading date. Yeah. So if given that this system issue, why can't member report 100% instead of 80 and then... So इसके अंदर I'll tell you there's another issue here. Exchanges have issued circulars that once a client sells shares, unless you have done the early paying, you cannot allow him further credit. Correct? Are you aware of that? Yes, yes. So as soon as sold shares of rupees 100, first you do early paying. As soon as you do early paying, his margin liability of 20 will become 0.
करेक्ट, अभी तक तो समझो वो डिपॉजिटर में अपडेट हुआ हाँ, तो अभी बट तक सीसी में एनसीएल नहीं में हुआ, गया नहीं। हाँ, सीसी में नहीं गया, तो पहले उस टाइम सीसी पे नहीं लेवल होगा। था, सीपी से डिपॉजिटरी में कर दिया, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, सो इफ एट ऑल इट इज गोइंग टू हिट वन स्नैपशॉट, नॉट ऑल, if at all. करेक्ट, बट हाँ, द अलर्ट्स but आर one will मिनिमल, be वी 100, वांट टू one will be reduce 100. So this is an interesting point. Naresh bhai, you'll have to build हाँ some हाँ logic नहीं on this. नहीं इसमें आपके ये जब ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, हाँ। नहीं so when we started generating the peak margin alert, we got this such type of instances, but what if you look at your the recent instances, you will not get, because what the fine tuning we have done in our system is that कि जो आप EPI रिपोर्ट करते हो उसको हम 0.80 से डिवाइड करके we make it 100, एंड फिर हम उसको पीक मार्जिन के अगेंस्ट में कंसीडर करते हैं पर, और वो पीक मार्जिन कैपिटल मार्केट में उतना होना भी चाहिए। So Sanjay bhai, you would not have got this recently. It's a, हाँ है नो, ना? वी आप हैव गॉट इट वेरी रिसेंटली सर, Very लेट मी तो recently. चेक आप द डेट। आप हमको शेयर करिए, बिकॉज दिस शुड नॉट बी अ केस, बिकॉज अभी जो पीक मार्जिन के हमको जो फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट मिल रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइमिंग सेम नहीं है विद इन दैट स्नैपशॉट टाइमिंग ऑफ ऑल एक्सचेंजेस, किसी ने पोजीशन कट करके नया पोजीशन लिया तो वही एक अलर्ट आ रहा है जो फॉल्स पॉजिटिव है, जो करेंटली अभी पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज हर सीसी का टाइमिंग अलग है। Correct. बट बाकी के हमको नहीं आ रहा था, हमको ये आ रहा था तो ये हमने फिक्स किया है। अगर आपको केसेस आए हैं यू प्लीज सेंड इट, हम एक बार चेक कर लेते कि उसका क्या हुआ है। So Sanjay bhai, the alert to you is not by design. It's initially ऐसे alerts आ रहे थे, and NSE has changed its system. But फिर भी आपको आ रहे हैं, तो it's a good, interesting example. Please share it with NSE. They'll tweak the system further to avoid such kind of unexpected alerts, unexpected alerts. Okay, but just to avoid this alert, we shouldn't be reporting 100% in any of the case. No, don't do that. Yeah, Okay, avoid wrong reporting just because to avoid alerts. That's the dangerous path. So, okay. But the recent report alert we received for 12th December so, 2023, I think just a month ago. that's What? 2 months ago. Okay, sir. Can you tell me the name of your broking? So I think that's best done offline. Nesh Yeah, bhai. Yeah, yeah, sure. yeah, yeah. You can, yeah. Yeah. That would be good. Okay. इससे 2 महीने पुराना अलर्ट है, संजू भाई सिस्टम चेंज कर दिया, देखो तो। Cool, sir. Cool. Okay. Yeah. Thank you. Next, please. Tosniwal ji, your question, please. SP Tosniwal ji. Hi. Uttam, the file can be uploaded multiple times. The question here is, can we upload multiple times even when first file is success with the same batch or the different batch? So if I repeat your question, एक First फाइल file में चढ़ाया, batch number 1 है, success हो गई, can I upload batch number 1 again? It will get overwritten, sir. You have to do batch number 2, no? So if I have a record in batch number 1 and batch number 2, which is same record, it becomes a duplicate record as, and NSE generates a query. So duplicates are not required, not supposed to be done, no, sir. So the client which has come in batch number 1, which is successful, should not appear in batch number 2. Is this the understanding? Yes. Okay. So But Uttam, you said in initially we can upload as many as time, which is not correct. Oh God. Okay. So this stands clarified. Key, suppose I load one batch to NCL which has 5 client codes. If I load a batch number 2 with those, if I load batch number 2 with the same 3 client codes, it will get Yes, appended. both will be counted. Sum total of these two will be taken. It just adds up, is it? Yes. Different CCs are following different paddhatis, but you can take offline. Yeah, I get it. I faced this issue, so I just understand. Clarified again, reconfirm and then clarify. Okay, got it. Mansi ji, your question. Thank you, Toshniyal ji, for pointing out from us. Hello. Yes, Mansi. Yes, Mansi, tell me, Mansi ji. I heard the hello, nothing else. Moving ahead. Kuldeep ji, your question, please.
Hello, am I audible? Yes, please. Sir, I have two, three queries. First query is I have bank guarantee created in favor of NCL out of prop fund. Suppose amount I have reported in segregation report in F&O segment 300. That whole 300 created in favor of NCL. But in allocation, I have reported in F&O segment 100 rupees. Balance 200 reported in MCX. Whether this practice is correct? ओके मैं रिपीट करा आपका क्वेश्चन। आपने 300 करोड़ 300 रुपए की एफडी बनाई, बीजी बनाई प्रॉप की, और आपने एक सीसी को दे दी। ठीक है, वो प्रॉप का है। हाँ। उसके बाद लेकिन जब आप लोड कर रहे हो, जब डेटा लोड कर रहे हो, तो एक सीसी को 150 दिखा दिया प्रॉप में, दूसरे को 150 दिखा दिया प्रॉप में। इन एलोकेशन में, सेग्रीगेशन में तो 300 है, तो 300 पूरा F&O सेगमेंट में ही बताया। सो एलोकेशन में बेसिकली यदि आपने 300 रुपए की एफडी बना के, क्या नाम है, बैंक गारंटी बना के एक सीसी को दिया कि दो अलग सीसी को दिया? एक ही सीसी को। एक ही सीसी को दिया, तो एक सीसी का पैसा दूसरे सीसी को आप कैसे एलोकेट कर रहे हैं? बट है ना, एक्सेस फंड तो है ना, हम बता सकते हैं, जैसे किसी क्लाइंट का होता है तो शॉर्ट एलोकेशन। आप ऐसे फाइल की बात करो, शॉर्ट एलोकेशन फाइल की बात करो क्या कोड 6? शॉर्ट एलोकेशन में तो क्लाइंट्स का ही बताता है। हाँ, तो मैं आपका अभी तक समझा नहीं, आप जैसे क्वेरी है नहीं ना, समझा। अब जैसे आपने जैसे, अब जैसे है एनसीएल है अपना क्लेम कॉर्पोरेशन, आपने 300 रुपए की एक बैंक गारंटी बनाई और एनसीएल के फर्म में दे दी, और एनसीएल के फंजिबल में जाके पड़ गया। बराबर। ठीक है, आपने एमसीएक्स सीसीएल को कुछ भी नहीं दिया। अब सेग्रीगेशन फाइल में अब जब पी का बैंक दिखाओगे, पी का सेग्रीगेशन खाली एनसीएल में 300 लोड करोगे, यहां तक तो मैं समझ गया। अब जो 300 रुपया एनसीएल में फंजिबल पड़ा है, वो एमसीएक्स सीसीएल को तो मैं कुछ भी एलोकेट नहीं कर सकते। आप अगर है ना, एमसीएक्स सीसीएल को तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं, अगर सेम सीसी हुआ तो सपोज है ना, F&O अभी में मैंने अब आपने चेंज कर दिया एग्जाम। अब ठीक है, सेम सीसी हो गया, तो सेम सीसी में कुछ फंजिबल तो कॉमन होता है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। तो 300 रुपया पड़ गया, 300 में से 150 आप कैश में कर दिया, 150 आपने एफएनओ में कर दिया सपोज। हाँ, डिफरेंट सेगमेंट कर दिया। डिफरेंट सेगमेंट कर दिया आपने। तो जो सेग्रीगेशन में प्रॉप का लाइन बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसको ब्रेक कर दो ना कैश एफओ। यदि सेम भी रखोगे, प्रॉप के लिए सेम भी रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होने वाला है। ठीक है, बट ब्रेक कर सको तो अच्छा है। अभी आप सेम रखते हो, आप सिंगल लाइन रखते हो, राइट? सिंगल अब लाइन। आपका पॉइंट समझा कि आपने 300 रुपए की एफडी बीजी ऊपर दी, ठीक है, और वहां पे आपने कोई भी सेगमेंट इधर उधर कर दिया प्रो में, लेकिन सेग्रीगेशन फाइल में खाली एक ही सेगमेंट दिखा रहे हो। क्या उसमें कोई तकलीफ है, ये आपका सवाल है? जी सर। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ, बिकॉज सीसी ऊपर जो कोलैटरल है वो सेगमेंट वाइज नहीं ले रहा, वो एक कंसोलिडेटेड ले रहा है, फिर आप उसको किसी भी सेगमेंट में घुमा सकते हैं एलोकेट। सिक्योरिटीज के अंदर सेगमेंट वाइज कंट्रोल है, फंड्स के अंदर फंजिबल अक्रॉस सेगमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ है, अनलेस would any MI would like to add a subtract that I'm right or wrong? Wrong right दोनों में से एक तो बोल दो। ठीक है सर, कोई जवाब नहीं आ रहा, probably they are thinking इसका क्या जवाब हो, बट ये मेरा स्टैंड है उत्तम। बट MI कंफर्म करेंगे तो एक बार ईमेल भेज के MI से कंफर्मेशन ले लीजिए। ठीक है, अभी मेरा है ना सर सेकंड क्वेश्चन था, सपोज है ना किसी क्लाइंट ने मेरे को चेक दिया 100 रुपीज का, तो है ना मैंने वो कैश सेगमेंट में ए कॉलम में फाइनेंशियल लेजर बैलेंस ए में है ना 100 रुपीज बता दिया अंडर कैश, और F&O सेगमेंट में मैंने अनक्लियर चेक्स में है ना जो बी ए कॉलम है उसमें 100 रुपीज बता दिया। 100 200 दिखा दिया? अच्छा नहीं, ए कॉलम जो कैश सेगमेंट में मैंने 100 बताया, FO सेगमेंट ए कॉलम में 0 बता के बी ए कॉलम अनक्लियर चेक में 100 बताया। तो आपने एक सीएम, एक मिनट, आगे सेगमेंट, सीएम सेगमेंट में
ये आपने 100 डाला हाँ और ये 0 है, ठीक है। और फिर एफओ में क्या 0 0 और क्या किया आपने एफओ में, क्या किया? आगे फिर अनक्लियर चेक्स में 100 बताया, यहाँ पे अनक्लियर 0। अनक्लियर रिसीट, या ये 100 दिख रहा है। हाँ ऊपर फाइनेंशियल लेजर बैलेंस 0। ऐसा क्यों करोगे आप? ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, अच्छा ये लॉजिकल नहीं है। ऐसे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये लॉजिकल नहीं है, आप ठीक है, समझिए। बट ओवरऑल बैलेंस तो मैच हो ही रहा है ना, मतलब अगर आप बेसिकली ओवरऑल बैलेंस हो रहा है सब ठीक है, बट ये लॉजिकल नहीं है। या तो यहाँ 100 लिखो या फिर यहाँ 100 लिखो, ये करो या ये करो। और सर सेग्रीगेशन सबमिशन के भी लेजर बैलेंसेज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। आपकी एंट्री कैश में पास हो गई, आप एफएनओ में दिखाओगे, वो भी दिस ठीक इज नहीं है, वो गलत है ना। वो गलत है। वो मिरर तो इमेज होना चाहिए आपका बुक्स जो आपके चौपड़े हैं वही एक्सचेंज को लोड करो, चौपड़े अलग एक्सचेंज को अलग, ऐसा गजब मत करो कुलदीप जी। ठीक है। हाँ जी। और फिर एक और क्वेश्चन था, सपोज है ना, जैसे आपने पार्ट बताए अलग अलग, प्लेस्ड विद टीएम, प्लेस्ड विद सीएम, प्लेस्ड विद एनसीएल। जैसे हम कैश में ना सेल्फ क्लियरिंग है, किसी क्लाइंट का पैसा आया, सपोज एक क्लाइंट का पैसा मेरे को नेफ्ट से रिसीव हुआ 100 रुपीज, तो फाइनेंशियल लेजर बैलेंस ए बी में बता दिया 100 सीएम और आगे हाँ सीसी को भी दे दिया 100 रुपीज सेम डे। तो मेरे को प्लेस्ड विद टीएम में भी बताना है 100, बिल्कुल प्लेस्ड बिल्कुल नहीं, डबल मत करना, डबल मत करना। अभी तक कुछ नहीं हुआ। और टीएम में 0 जाएगा। टीएम शुड बी 0, सीएम शुड बी 0, डायरेक्ट एनसीएल में 100 नो जाएगा। नो 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 नो, हैंग ऑन भैया, ऐसे नहीं। आप बेसिकली आपका ये फाइनेंशियल, ये सीएम है, ये एफओ है, ठीक है। स्क्रीन पे आ जाइए, इसको तो स्क्रीन पे ठीक बड़ा है। कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ उसका 100 रुपये आया, एकदम क्लियर है। और आपने कैश लाइन विथ, कहाँ गया भाई अपना, कैश लाइन विथ सीसी में जाना चाहिए। ये 100 है, और फिर कैश लाइन विथ सीसी जो है ना अपना, कैश प्लेस विथ सीसी, प्लेस्ड विद सीसी, कैश 46। ये आपने 100 डाला, यहाँ 100 डाल दिया, बराबर। मतलब एक्चुअली 11 मोटर लेवल आपने ये किया ना। हाँ प्लेस्ड विद एनसीएल में डाल, प्लेस्ड विद सीसी में डाला। हाँ ये रहा, ये आपने किया ना बेसिकली, सॉरी आईडी करना पड़ेगा, क्षमा कीजिए, बट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये रहा। तो आपने ये कर रखा है 11 and 46 इन सीएम, करेक्ट। यस तो एफओ में करेक्ट। 0 जाएगा ना। और यहाँ 100 मत डाल देना गलती से भी, या यहाँ 100 मत डाल देना। जो आप, अच्छा आपने चौपड़े में क्या एंट्री की है बुक्स में? वो कैश में बता रखा है 100। तो जो चौपड़े में एंट्री है उसका मिरर इमेज होना चाहिए ना, जो बुक्स में एंट्री किया वही दिखाओगे, आप एफओ में नहीं दिखा सकते। बट नहीं दिखाने से कुछ गड़बड़ हो जाती है, पेनल्टी लग जाता है। नहीं सर ऐसा तो हुआ नहीं अभी। नहीं हाँ, तो सब डबल मत दिखा देना गलती से भी। जैसे ये तो 100 दिखाओगे, ये 0 दिखाना, ये इसको 100 मत कर देना, वरना पे डबल हो जाएगा, वो अवॉइड कीजिए। बाकी के जो कॉलम्स होते हैं जैसे प्लेस्ड विद टीएम, प्लेस्ड विद सीएम, वो सब 0 जाएगा ना। यदि ये 0 है तो आगे सब अपने आप 0 हो जाते हैं। 11 नंबर जान है इसकी, 11 0 है तो आगे आप कुछ डाल ही नहीं सकते। जब आपके क्लाइंट को कुछ पड़ा ही नहीं है तो आगे प्लेस क्या करोगे भाई? ठीक है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Murali ji, your question, please. Murali ji. Hello. Hi, Uttam. Good evening. Murali here. Uttam, how is that like empty of cash collateral calculated? Like various returns going on. Yeah, empty of cash collateral is a very complicated issue. There's a big fight going on. Just hold your horses and we'll come to a decision one way or the other in a month.
Till then, just bear with Yeah. the uncertainty, please. There are two things. So in fact, because alerts are getting generated on that, one more thing is like they are expecting the exchange is expecting us to hold this in CC, which is not possible because it's getting Yeah. subsumed Yes, in the debit. but all these debates and discussions are going on Okay, at the now, broker's side, sir. I understand the issues. It's under deep discussions. and on peak ledger balance, we have certain issues. So if the peak ledger balance is, let's say, a non-MTF, As I mentioned, so on peak leisure balance, sir, we'll just come out with a detailed, more detailed guidelines. Okay. Huh. No issues. But members Done, have done, done. the issues have been flagged. So Only thing is we need some kind of understanding from exchanges on alerts. Otherwise, yes, it should not lead to the peak margin penalties, alerts. I think. Peak margin alerts are causing some grief. So if we know the logic they are following, it would be helpful. It's unlikely that there's a logical flaw, but still, it's always nice to know is there something wrong at our side. Sure. Right, Murli. Thank you. Harishi, your question, please. उत्तम सर हुकुम। सर मेरा क्वेरी कॉलम नंबर 64 के लिए है 64, अनक्लेम अनसेटल्ड क्लाइंट फंड उसके लिए सर है ना अभी क्लाइंट को हम क्वार्टरली पे आउट कर रहे हैं और क्लाइंट का रिजेक्शन हो रहा है और क्लाइंट नॉन ट्रेसेबल है तो अभी उसको उसमें यस कर दिया कॉलम में उसको लेकिन एक्टिव इनएक्टिव करना है क्या क्लाइंट को नेक्स्ट टाइम मैं क्वार्टरली सेटलमेंट करूंगा या नेक्स्ट टाइम अनक्लियर वो नॉन ट्रेडेड वाला क्लाइंट का 30 डेज वाला करूंगा तो उसमें वापस रिटर्न आएगा या कुछ भी आएगा तो वो करते रहना है उसको या उसको ये इनएक्टिव करना है गुड क्वेश्चन ओके बेसिकली एक बार ट्राई किया 2 बार ट्राई किया फिर मैं रुक जाऊं दैट्स अ क्वेश्चन कितना ट्राई करके रुक जाऊं है ना हाँ सर I think 2-3 बार करके रुक जाइए as long as you have documents to prove that you tried. For example, account number 23, बैंक अकाउंट 23 में ट्रांसफर करने की कोशिश की, मैसेज आया अकाउंट इज क्लोज्ड. अब तुम बार-बार उसको ट्रांसफर करके क्या करने वाले हो? नहीं तो वो क्लाइंट को मैं इनएक्टिव कर दूंगा तो फिर उसका क्वार्टरली सेटलमेंट होगा नहीं तो फिर वो फंड भी वैसा ही पड़ा रहेगा यदि उसने कुछ बैंक में कुछ चेंजेस कर दिया है तो फिर मेरे को ट्रैक कैसे रखूं उसको अब वो क्लोज्ड अकाउंट को नहीं क्लोज नहीं है तो क्या उसके यदि उसका बैंक अकाउंट क्लोज नहीं है और पैसा अंदर नहीं जा रहा हाँ वो दे रहा है फंड और उसका जा नहीं रहा है पेमेंट उसको नहीं जा रहा है क्वार्टरली सेटलमेंट सर यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली तो इनएक्टिव मत कीजिए ओके बट एक्टिव क्लाइंट का लेकिन इसमें यस करते रहूं ऐसा बोल रहे हो इसमें तो यस करना ही पड़ेगा आपको इसमें जितना बार रिटर्न हो रहा है जो भी क्लाइंट्स का तो इसमें यस नहीं करोगे तो अलर्ट आने वाला है देख लीजिए ओके 64 में यस नहीं करोगे तो अलर्ट आएगा और वापस उसका सेकंड टाइम में क्लियर हो जाता है तो यहाँ से यस हटा दो सीधी बात है यानी जिनका पे बेसिकली 60 व्हाट इज 64 तुमको सेटलमेंट करना था तुम सेटलमेंट कर नहीं पाए ओके क्यों 64 यस क्या मतलब सब मैंने कोशिश की वो बंदा लापता है ठीक है इसलिए ये तो तुम 64 यस करोगे तो सीसी एक्सचेंज तुमसे पूछेगा नहीं तुमने क्यों नहीं दिया एक्सचेंज को आपने पहले ही बता दिया कि बंदा लापता है मतलब पता चल गया उसको दे दो आप जितने क्वार्टरली में मेरे नॉन ये नहीं जा रहे हैं मैंने 2-3 बार ट्राई करके मेरा नहीं जाता है तो उधर यस कर दो सबको हाँ लेकिन इनएक्टिव का लॉजिक है कि वो बंदा यदि लापता है तो मतलब सौदा भी नहीं कर सकता करेक्ट ठीक है यदि वो मस्ती से सौदा कर रहा है लापता है तो भैया आप गलत बात कर रहे हो ओके ऐसा तो हो नहीं सकता कि लापता है लेकिन सौदे कर रहे हैं सर और ये ना एक दूसरा एक और क्वेश्चन था अपना एलोकेशन और सेग्रीगेशन में इसमें आपने बोला जो अमाउंट एलोकेट किया है वो मिनिमम यानी होना चाहिए जो अमाउंट सेग्रीगेट किया है नॉट एलोकेट हाँ ओके सेग्रीगेशन के अंदर मैं बोलता हूं कि कैश प्लेस विद सीसी में बोलता हूँ 100 रुपया अब क्लाइंट A001 सपोज तो 100 रुपये उसको एलोकेट तो करोगे ओके एलोकेशन उससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उससे ज्यादा हो सकता है वो सेट ईपीआई शिपी ज्यादा हो सकता है ये मिनिमम एलोकेशन है ओके और मतलब मैं सॉफ्टवेयर अभी उत्तम सर क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर इनसे एक दूसरे से मैच करने को थोड़ा तकलीफ कर रहे हैं सर बैंड सर एक तो एक फिगर नहीं है पूरा बैंड है एक मिनिमम बैंड है एक मैक्सिमम बैंड है बैंड के अंदर कुछ भी एलोकेट करो उससे कम मत करना उससे ज्यादा मत करना ओके यानी जो सेग्रीगेशन मैंने 100 रुपीज किया है तो मैं एलोकेशन 120 150 जो उसका अनक्लियर और ईपीएन ऐड करके वो एक्स्ट्रा हो सकता है बेसिकली ये रिटेन वाला बोले तो रिटेन में सर मैं ना एलोकेट तो टाइम चला गया समझो 8 बजे का मैं 10 बजे क्लाइंट ने 10,000 रुपीज दिया एक क्लाइंट ने ठीक है अब मैं सेग्रीगेशन तो जब करूंगा T+1 पे
तो उसको 10,000 को मैं सेग्रीगेट नहीं कर सकता, रिटेन में डालना पड़ेगा उसको। रिटेन में डालना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा। यदि मेरा सीसी के पास एक्स्ट्रा फंड है जो उसमें अनएलोकेटेड में पड़ा हुआ है, तो मैं वो उसको नहीं बता सकता कि मैंने उसको नहीं सर, उसके लिए। लॉजिकल नहीं है, तो बैंड मिसमैच हो गया फिर। ओके, मेरा एलोकेशन में नहीं हुआ और इधर सेग्रीगेशन में मैं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, ऐसा। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा इतना पैसा दे के रखा हूँ, सब लाएंगे सीसी दिखाने देना यार, नहीं तो आपका बैंड उड़ जाएगा, सेबी का सर्कुलर का उल्लंघन हो जाएगा। यू हैव टू मिनिमम एलोकेट। यदि तुमने सेग्रीगेशन में दिखाया कि सीसी में पड़ा हुआ है, यदि 46 या 48 में दिखा दिया, तो एलोकेट करना जरूरी है। ठीक है सर। अच्छा, तो उसके बाद ये पूछ रहे थे जो फाइल के लिए ना, तो अपने आईसीसीएल में तो ऐसा है कि फाइल नंबर 1 में करता हूँ और मुझे लगता है फाइल रॉन्ग है या फाइल में कुछ, तो वापस नए क्लाइंट में फाइल नंबर 2 में करता हूँ ना, तो लेटेस्ट फाइल को वो कंसिडर करते हैं, ऐसा बिल्कुल मेरे को सही है, बोला गया है। दोनों दोनों सीसीज के तरीके भिन्न हैं, डिफरेंट है। तो बोले आप जो लास्ट फाइल अपलोड करोगे ना, वो हम कंसिडर करेंगे। करेक्ट, वही लास्ट। तो इसलिए मैंने वो पॉइंट बोला, बट अलग अलग सीसी अलग अलग पॉलिसी करते हैं, एनसीसीएल का अलग होगा, एमसीएक्स का अलग होगा, तब तो हमने सीसी का खुद देखना पड़ेगा बॉस। हाँ ठीक है सर। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। आप इस तरह के ये रखते हैं तो उससे बहुत बढ़िया है, यानी सबको, जो नॉर्मल आदमी भी है उनको भी अंडरस्टैंड हो जाता है सर। तारीफ के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट नीरज जी, योर क्वेश्चन प्लीज। उत्तम जी, हुकुम। सर मंडे को क्लाइंट का 100 रुपीज का क्रेडिट है, ट्यूसडे को 100 रुपीज का पेमेंट कर दिया, अपने क्लाइंट को पैसा दे दिए, बराबर है। तो ट्यूसडे का सेग्रीगेशन फाइल में पीक लेजर बैलेंस 100 रुपया रहेगा। मेरे हिसाब से तो 100 रुपये होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हो सकता है उसने सुबह 9 से 3 बजे सौदा किया और इंटरडे किया और सरखा किया और 4 बजे पे आउट ले गया, राइट। तो पिक अभी तो 100 होना यही चाहिए। केस में हाँ मंडे को क्लाइंट का क्रेडिट बैलेंस 100 रुपया है, हाँ और मंडे के एफएनओ ट्रेड में उसका M2M है 100 रुपया, हाँ जो सेटल होगा ट्यूसडे को। हाँ। तो ट्यूसडे को पिक 100 है लेजर बैलेंस। कि 100 है कि 0? ये सवाल है क्या? हाँ जी सर। तो अच्छा देख, अब देखो, यदि आप अपने दिन को गिनते हो कि रात के 12 बजे से रात के 24 घंटे का यदि आपका दिन है, तो पीक 100 होगा। लेकिन आपका दिन यदि 9 से 12 बजे तक का है, तो 0 होगा। मैं जानता हूं इस टॉपिक में मेरा मानना है कि पीक 100 होना चाहिए, लेकिन ये भी जानता हूं मैं कि एमआईएस का मानना है कि पीक 0 होना चाहिए। तो सर इसका इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्शन लेटर्स आ रहे हैं सर। इंस्पेक्शन ऑब्जेक्शन, वो एक्सचेंज बोलता है कि 0 होना चाहिए। मैं उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन एक्सचेंज एक्सचेंज है, फाइनल उसने बोल दिया, वही मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो 100 पीक था यार। सर वो मैं सेग्रीगेशन में मार्जिन रिपोर्ट नहीं कर सर रहा सर हूँ, एक्सचेंज नहीं सेग्रीगेशन में मानता मैं। सर सैट में उसको खींच लेना और ठीक कर हो जाएंगे। लेकिन अभी उनका ये स्टैंड है, हो सकता है सैट में आप हार जाओ, हो सकता है सैट में वो जीत जाए। सर सेट में कहा जाना है सर। नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो न्यायाधीश के पास जाना आपका धर्म है। न्यायाधीश नक्की करेगा कि अन्याय आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। और न्यायाधीश बोले कि नहीं एनएससी सही है, आपके साथ अन्याय नहीं हुआ, तो ठीक है। इसमें झगड़े वाली बात नहीं है, बात न्याय की है। सर अभी तक तो कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं आया है, सिर्फ एडवाइस आया है, लेकिन वो सर एडवाइस भी एक कंपाउंड हो रहा है, सर एडवाइसेस बहुत सर बढ़ रहे हैं। एडवाइस भी चेहरे पे एक थप्पड़ है। यस सर। हल्का थप्पड़ है, लेकिन थप्पड़ है, मुक्का नहीं है, सर तो क्या 3 हुआ? थप्पड़ तो अभी तक। यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने आपको बोला कि तुमने गलत किया, आपने समझाया होगा, अपील किया होगा, अपना सबमिशन दिया होगा। लेकिन एक्सचेंज के अपने जजमेंट में मुझे आपकी बात उनके गले नहीं उतरी, उन्होंने आपको एडवाइस दे दी, ठीक है। राइट। या तो आप एडवाइस मान के अपना बिहेवियर चेंज करो, और बोले नहीं तुम गलत हो लेकिन मैं और कुछ नहीं करूंगा, तो फिर ये गलत बात है आपकी। अब आपने उनकी एडवाइस मान ली तो अपना सिस्टम चेंज कर दो, उनकी एडवाइस नहीं मानी तो आप साइड में जाओ, तीसरा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। सर एडवाइस अगर मान लेता हूं तो क्विक मार्जिन शॉर्टफॉल आ जाएगा, अगला अलर्ट वो आ जाएगा सर। सर कैसे? सर वो, अब एक्सचेंज क्या बोलता है, खाली पेन वाला पीक में मत पकड़ो ना, वो तो कर ले पीक, खाली पेन पेन मत पकड़ो। नॉर्मल थोड़ी चेक के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं। राइट सर। वो तो अपना अच्छा। सॉफ्टवेयर कैलकुलेट, पेन तो मालूम, सी एक्सचेंज क्या वो एक्सचेंज क्या कहता है कि जो तुमको मालूम है अगले दिन पेन आने वाला है, जो तुमको मंडे रात को पता है कि ट्यूसडे सुबह का पेन ही है, उसको तुम हाँ पीक में कैसे पकड़ सकते हो? उनका भी उनका उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी उसका भी अपना लॉजिक है। हम बोलते हैं साहब वो ठीक है, लेकिन पेन तो 11 बजे है। तो बोलते पेन 11 बजे, तो क्या तुझे पता था पेन है? तो ये वाली बात है, या तो एडवाइस मानो या लड़ो।
सर यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर एक्सचेंज स्पेसिफिक सर्कुलर क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दे, अरे कर तो दिया, हम आपको लोग वो एडवाइस दे वेंडर को दिया भी बोल सकते हैं सर, वेंडर सर। भी आप चेंज करने वेंडर के को लिए तैयार एडवाइस का नहीं है। लेटर दिखाओ ना, क्या कर रहे हो? सर वो दिखा रहा हूँ, लेकिन वो उनका बोलना है क्या है कि मैं एक ही मेंबर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक है सब मेंबर के लिए साथ में है। सेग्रीगेशन वाला जो रिपोर्ट है वो मैं खुद तो बना नहीं पाऊंगा, वेंडर तो मैं बना इतना के मैं नहीं आपसे देगा। करा सकता हूँ, आप एक्सचेंज को ईमेल भेजें या बीबीएफ को ईमेल भेजें। बीबीएफ आपके सवाल के साथ वो ईमेल हम फॉरवर्ड करेंगे एक्सचेंज को। एक्सचेंज से राइटिंग में ईमेल का रिप्लाई लाएंगे, आपको दे देंगे, और वो रिप्लाई आप अपने बैक ऑफिस वेंडर को दिखा सकते हो। यदि आप चाहे तो आपके बैक ऑफिस वेंडर से संस्था एसोसिएशन भी बात कर लेगी, बट मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। और कुछ नहीं है तो अभी ये जो यूट्यूब पे वीडियो में अभी अपना जो डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन का कट करके उसको भिजवा देना। ओके सर। सर दूसरा एक क्वेश्चन था सर, ये सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग अभी भी जरूरी है क्या? सर सर ये बहुत ही सिद्धांतिक सवाल है, मैं इस पे कभी और डिस्कस करूंगा कि, लेकिन सेगमेंट वाइज ब्रेक करने का एक लॉजिक है, ठीक है, थोड़ा फारफेच लॉजिक है, इसलिए एक बात तो ये रहेगा, बट हो सके तो हम वापस रिक्वेस्ट करेंगे एक ऑल ऑप्शन दे दे यार। सेम राइट। सेगमेंट वगैरह एक ALL ऑल ऑप्शन दे दे, उस पर सब चढ़ा दूंगा यार, मत तंग कर। बट मतलब MTF एंड ऑल नॉन MTF एंड MTF ये दो अलग कर दीजिए। विद इन नॉन MTF के अंदर ब्रेकअप हटा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, रिक्वेस्ट करेंगे, राइट लाइफ सर। सिंपल हो जाएगी। आई एग्री। राइट सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Durgesh ji, your question, please. Durgesh ji. हेलो सर, छोटा सा दो क्वेश्चन रह गए मेरे। जैसे एक क्लाइंट का मैंने आज 100 रुपीज का एलोकेशन कैश सेगमेंट में किया, ओके, और जब मैं सेग्रीगेशन करने गया तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, उसको एफओ में सेग्रीगेट कर रहा था 100 रुपीज को। तो ओके वो चलेगा सर उसमें या नहीं? सर, आपको Allocation बैंड ऊपर नीचे हो जाएगा ना। मेरा क्रेडिट तो मैंने सेग्रीगेट कर दिया पूरा सर। सर बैंड बैंड उस सेगमेंट वाइज बैंड बनाते हैं ना, बैंड मिसमैच अप एंड ओके डाउन। ओके आप एफओ के लाइन में बोलोगे लाइन विद सीसी, सीसी ओके बोलेगा मेरे पास तो है नहीं एफओ में, तो कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे देखो कैश में तो है, तो अच्छा कैश में तो बोला है लेकिन यहाँ नहीं दिखाया, फिर पकड़ो, दो गड़बड़ कर दिया आपने। अब तो उस वेंडर को बोलो कि जो एलोकेशन की फाइल है ना, 8 बजे उसका रिटर्न फाइल आता है, ओके वो रिटर्न फाइल सिस्टम में खींचे और रिटर्न फाइल को मद्देनजर रखेगा तो सही एलोकेट कर देगा। तो एलोकेशन इस पर सीसी फाइल के अकॉर्डिंग करवा देता हाँ, हूँ। सीसी के हिसाब से जो एलोकेशन फाइल है वो खींचो, आ जाएगा ओके 8, 8:30, 9 बजे वो यस लोड सर। करो। उस सेग्रीगेशन फाइल में सी सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, रैंडमली लेफ्ट राइट ऊपर नीचे का डाल रहा है, सो तो रैंडमली मत डाल, इस लॉजिक से डाल, वो ओके कर सर। देगा, बैक ऑफिस वाले अच्छे हैं। ओके सर, अच्छे ठीक है नहीं सर। अच्छे लोग अरे सर, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ चेंजेस दैट हैज कम, सब इन महारथियों ने सब इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं सारे बैक ऑफिस वेंडर को हर वेबिनार में जादूगर बोलता हूँ। आप सॉफ्टवेयर वाले होते तो आप अब तक बेहोश हो गए थे, खिड़की से कूद गए होते, वो नहीं हो सकता। अब तो बैक ऑफिस वाले और टिके हुए हैं, बिल बढ़ाते हैं हर साल, बट ठीक है काम भी करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे ये इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटीज होता है ना, जिन पे एक्सपोजर मिल रहा है मेरे को सीसी से, तो उसको सेग्रीगेशन में दिखाना प्रो में कंपलसरी है या नहीं दिखाना चलेगा? दिस वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ ये एक्सपोजर और वो अलग कहानी। अब समझो सेग्रीगेशन क्या है, जो क्लाइंट का पैसा है उसके साथ तुमने क्या किया। ओके अब जो ISF आपने दे रखा है, इंटरेस्ट फ्री ISD जो भी, वो क्लाइंट का पैसा है, नहीं तो उसको सेग्रीगेशन में किस नाम पे दिखाओगे आप? प्रो अरे कॉमन अच्छा, प्रॉप का आपका कैपिटल कितना है, सपोज 10 करोड़ रुपए, आप दिखाते हो प्रॉप का 10 करोड़ पड़ा हुआ है, कहीं दिखाते हो? नहीं दिखाते। नहीं प्रॉप का नहीं लेजर बैलेंस होता है, प्रॉप का लेजर बैलेंस नहीं होता। नहीं होता है। हाँ, सो ओके सर। ठीक। ओके थैंक यू सर। मैं गुस्सा नहीं थैंक हो रहा, मैं थोड़ा बोलने का स्टाइल थोड़ा उत्ते स्टाइल है, समझ सोचेगा कि थैंक यू सर। ओके स्टाइल। Rajesh ji, your question, please. Rajesh ji. हेलो हेलो यस सर। उत्तम सर, एक इसमें क्वेश्चन था। जैसे अज्यूम कि मेरे कैश सेगमेंट में 600 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है और FNO में 400 क्रेडिट बैलेंस है। अब मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, वो पूरा 1000 रुपीज कैश में अलोकेट करके और कैश में सेग्रीगेट करके तो रिपोर्ट ये कर वाला रहा है। वीडियो उसको भेज देना आज का। अरे बट वो ऐसा है कि यार हमारे जो मल्टीपल वेंडर है सबके यहाँ सेम लॉजिक चल रहा है, तो वेदर दिस शुड बी बैक बाय JV और नॉट? आइडियली जैसे नरेश भाई बोले ना, इट शुड बी अ मिरर, what you give to the MIIs
should be a mirror of what the way you have recorded in your books. ठीक है, विच मीन जहां पर जो पोजीशन है जो सेगमेंट में है वहां पर वही उतना होना amount- चाहिए, हाँ, लॉजिकल है। हाँ, अब सपोज ये बात आपके सही है। केस में तो आप सेम सीसी में हो, सपोज आप Correct. दो अलग सीसी में होते, हाँ, तो एक सीसी को दिखाते दूसरे को नहीं दिखाते। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता हाँ, था। यदि Correct. अब जस्ट बिकॉज सेम सीसी में हो गए तो जहां नहीं दिखाता मैं आलसी हो गया। ओके हाँ, बट ये दूसरी बात है कि कभी ऐसा आप करो तो सीसी यदि आपको पकड़ो तो प्रॉब्ली दे ट्रीट यू विद अ लाइटर, मतलब जेंटली, शायद एडवाइस देके छोड़ देंगे कि भैया सेम सीसी इसलिए छोड़ रहा हूँ लेकिन ठीक से कर। बट ठीक हाँ हाँ, इट शुड बी द मिरर, मतलब जो भी जो आइडियली सेगमेंट हाँ का हाँ रिपोर्टिंग हुआ है वो हाँ सेगमेंट के हाँ, ट्रायल बैलेंस में उतना फंड्स मिलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए That's the और idea. लॉजिकल भी है। देखो आप समझो क्या है प्रॉब्लम, 99.9% ब्रोकर्स अच्छे हैं, 1% 0.01% टेढ़े हैं, राइट। सिस्टम बनता है उन टेढ़ों को पकड़ने के लिए, और अपने को अपने सोच भी नहीं सकते कि टेढ़ों का दिमाग कितना टेढ़ा चलता है। Correct. अब एक्सचेंज क्या है, उनको सुबह शाम टेढ़ों से डील करना पड़ता है, तो सिस्टम टाइट बनाते हैं ताकि टेढ़े पकड़ में आए। हम बोलते हैं हम तो सीधे, हमें क्यों पकड़ रहे हो? अरे यार उनकी मानसिकता समझिए आपका। उत्तम सर, एक और क्वेश्चन था जो आपने पॉइंट नंबर 16 के लिए बोला था। हाँ, तो हमारा थिंकिंग ऐसा है कि पॉइंट नंबर 16 में ब्रोकर के आरएमएस पॉलिसी के बेसिस पे वैल्यूएशन होना चाहिए, मैं भी यही मानता हूँ। कि जो भी मैं लिमिट बट मेरे ख्याल से दूंगा। जब मैंने बोला उसके बाद ही मान गए मोटा मोटी, कोई एमआई जोर से बोला नहीं कि तू गलत है, तो मैं मानता हूँ मैं सही हूँ। और फिर जो प्लेस विद एनसीएल होगा या प्लेस विद सीसी होगा वो उसी पे चलेगा, इक्विवेलेंट तो नहीं रह सकता, बिकॉज वो उनका नहीं इक्विवेलेंट ही रहेगा। इक्विवेलेंट कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर नहीं, यदि वॉलिडिटी लिमिट यदि के आपने बाद 16 में 100 डाला हाँ तो प्लेस और उसको रिप्लेस कर दिया, तो हाँ आप वहां पे 101 नहीं डाल सकते, वह बिकॉज 99 भी नहीं डाल सकते। क्योंकि कैसा होगा CC02 या एफसेक फाइल में उसमें वैल्यू माइट पॉसिबल कि 100 के बदले 40 का ही बेनिफिट मिल रहा हो। वो ठीक है, वो उनका प्रॉब्लम है। चलेगा। हाँ, तो हम तो अपने क्लाइंट को 100 का मान लिया, हम तो 100 का लिमिट दिए उनको फ्रंट एंड। अभी फिर जो ठीक है, और अंडरस्टूड। इन्होंने एनएससी में नरेश भाई ने कंफर्म किया कि जब आप वो अलर्ट जनरेट कर रहे होते हैं तब हमने 16 में क्या डाला, एब्सेक्ट में क्या डाला, वो नहीं देखते। वो देखते डिपॉजिटरी में कितने का माल प्लेज है, उसको पकड़ लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन सिस्टम, मुझे अच्छा लगा सुन के, मुझे नहीं और वो पता। वैल्यूएशन कौन से बेसिस पे करते हैं? T-1 क्लोजिंग, T-1 वार। वार में भी 2 वार होता है, ओनली वार, वार प्लस ईएलएम और अब वार सब जगह तो वार लिखा हुआ है, एलएम के लिखा हुआ ध्यान नहीं मुझे ओके। वैल्यूएशन के लिए, बट क्लैरिफाई कर लीजिए अभी। नरेश सर, वार लेते हैं कि वार प्लस ईएमएल लेते हैं, ईएलएम लेते हैं एक दिन नहीं पुराना? ओनली वन। हाँ सर, और वो आपको पता भी रहेगा बिकॉज हर इंस्पेक्शन में हम वही बरसों से वही वही मेथडोलॉजी चालू, वो कंसिस्टेंसी है उसमें। कंसिस्टेंसी है। हाँ जी सर। हाँ राजेश अपार्ट जी। दैट एमटीएफ रिलेटेड एक क्वेरी था। अभी रिसेंटली जो सर्कुलर आया था जहां पर वीकली अनाउंस डिसकंटिन्यू हो गया, अभी एक्सचेंज के यहाँ से एक अलर्ट भी आते हैं कि आपका प्रिंसिपल जी वायलेट हो रहा है बेस्ड ऑन द सेग्रीगेशन। अच्छा, आप वो एमटीएफ का पैसा उसमें डाल रहे हो क्या, कैश के अंदर? आप एक्सचेंज का सर्कुलर एकदम सही ढंग से फॉलो कर रहे हो? हम लोग उसमें कैसे कर रहे थे, हम लोग उसके एमटीएफ फाइनेंशियल लेजर, एमटीएफ के अंदर जो कैश लेजर, कैश बैलेंस है, कैश वो कोलेटरल। वो हाँ कैश करता है, वो नॉन एमटीएफ के फाइनेंशियल लेजर में और उसके अंदर ऐड कर रहे हो आप? यस कर रहे थे, बिकॉज वो हाँ इफेक्टिव तो आया था फिर मेरे सवाल हाँ, का। नहीं बिकॉज नहीं एफए का मैसेज आया था। हाँ, नहीं, लेकिन हम लेस करके भेजते हैं मेंबर को। जिन मेंबर का हमको फर्स्ट टाइम पता चल जाता है कि ये मेंबर ऐड करके रख रहा है, तो हम उसको फर्स्ट टाइम आपको अलर्ट आया रहेगा, बट बाद में हमको पता चल जाता है और फिर हम उसको रिड्यूस कर देते, तो आपके क्रेडिटर्स में से वो रिड्यूस होके आता है। ओके। अरे वाह यस। यार, थैंक यू नरेश जी। अब सब है बिकॉज ना, अब मैं थोड़ा साइड ट्रैक कर रहा हूँ, सब लोग है ना एमआईएस को, जैसे क्लाइंट है वो हमेशा ब्रोकर को गाली देते रहते हैं, वैसे ब्रोकर से हमेशा एमआईएस को गाली देते थे। ठीक है, ये दिल से नहीं देते, बस बोलने की बात है। बट ब्रोकर्स भी बहुत मेहनत करते हैं क्लाइंट की सेवा के लिए, और एमआईएस भी बहुत मेहनत करते हैं ब्रोकर्स को हेल्प करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। लाइट राजेश जी। बाकी के जो भी क्लैरिफिकेशन है, मेक श्योर कि वो ऑन पेपर एज सुन एज पॉसिबल आए, तो इसमें 100% सक्सेस अचीव होगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hello, a question from NJ India, please. हाय उत्तम जी। यस गुड सर। इवनिंग। हाँ उत्तम जी, ये पॉइंट नंबर 64 रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये अगर मैं कोई क्लाइंट का सेटलमेंट करता अदिति हूँ। तू बात करने। हेलो विस्पी आपका माइक चालू है। हेलो, हाँ एम आई हाँ, ऑडिबल? या यस यस प्लीज।
उत्तम जी, अगर मैं कोई क्लाइंट का सेटलमेंट करता हूँ 1000 रुपीज का, और वो सेटलमेंट डेट के दिन लेट नाइट बैंक में वापस क्रेडिट हो जाता है, और क्लाइंट का एक ही बैंक मेरे साथ रजिस्टर है, विच इज क्लोज, तो सर ये 64 वाले में मुझे उसको अनसेटल दिखाना है? यस। और फिर वो पैसा जो पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मेरे बैंक अकाउंट में रख के फिर मैं नेक्स्ट डे उसको वापस अपस्ट्रीम कर दूं? यस। तो सर फिर नेक्स्ट डे जब मैं सेग्रीगेशन रिपोर्ट करता हूँ, उस टाइम पे वापस यहाँ पे यस दिखाने की जरूरत नहीं है ना? एक ही दिन मुझे यहाँ पे वाई दिखाना पड़ेगा ना, अनक्लेम अनसेटलमेंट में? आई थिंक सो। सीसी एक्सचेंज एमआई इसको बता सकते हैं? अगर देखिए सर, आपका पैसा जब तक नहीं जाता है तब क्लाइंट तक को, तब तक वो आपके लिए अनट्रेसेबल क्लाइंट की तरह है, तो वो आपको यस करके ही रखना पड़ेगा। हमेशा के लिए वाई है जब तक वो ट्रेस नहीं होता। नहीं, बट सर क्लाइंट ट्रेसेबल है, मेरा क्लाइंट के साथ कॉल पे डिस्कशन भी हो रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि मैं मेरा बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करा दूंगा, तब तक आप अपने पास ही पैसा रखिए, मुझे चेक इशू भी मत करिए। नहीं इन ऐसा दैट केस सर क्या करेंगे, क्योंकि अनट्रेसेबल वाला जो गाइडलाइंस बट है वो उसमें क्लाइंट सौदा कर रहा है, नहीं। तो भाई बेसिकली उसका बैंक अकाउंट अनट्रेसेबल है। हाँ तो सर आपको यस तो करना ही यस ही पड़ेगा। करना पड़ेगा भाई। यस यस, आपके लिए वो मतलब अनट्रेसेबल समझिए, आप उसको सेटल नहीं कर पा रहे हो फॉर वट एवर रीजन, माइट बी अनसेटलेबल है, चलो। हाँ तो सर जैसे जो भी वो फंड को अनसेटल, हाँ हाँ, वो फंड को मुझे डेडिकेटेड अनट्रेसेबल क्लाइंट के लिए जो बैंक अकाउंट ओपन किया है उसमें अरे वो बाबू करने। वो चेंज हो गया है, अभी ऊपर अपस्ट्रीम करके उसको एलोकेट करना है, वो बैंक अकाउंट बंद कर दो अनट्रेसेबल वाला। ओके गॉट इट, मतलब हाँ अपस्ट्रीम कर देना है वो पैसा, हाँ, और क्लाइंट को एलोकेट कर देना है। उस क्लाइंट को एलोकेट कर दो बस। और यहाँ पे जब तक उसका सेटलमेंट नहीं होता तब वो तक यस वाई, यस यस यस, हाँ हाँ। अगर वो ट्रेड कर देता है तो फिर उस दिन नो, से बंद उसको कर ट्रेड देता करने मत देना, ये तो कोई बात नहीं है। देखो वो वैसे तुम सेटल नहीं कर सकते लेकिन ट्रेड कर सकते हो, नहीं नहीं सर, ये ट्रेड क्या नहीं बात हुई? करना है, ट्रेड बिल्कुल नहीं नहीं है। करना है यार। ये हमारा सर्कुलर भी है, आप कुछ देखिए, फरवरी का सर्कुलर है, वहां पे हमने लिखा है कि मेंबर हैज टू पुट एफर्ट्स टू सेटल द क्लाइंट, डिस्पाइट ऑल दैट एफर्ट्स, इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफर मनी टू द क्लाइंट, देन आप उसको अनट्रेसेबल दिखाइए, अनसेटल्ड बताइए। बट अनट्रेसेबल अनसेटल को सौदा करने नहीं दे सकते, तो एकदम ही गलत बात होगी, अनुचित बात उसको होगी, गलत तो क्या। नहीं, उसके लेजर में तो रिवर्स एंट्री होगी ना सर? एक ऐसा क्लाइंट है जो आपको बैंक डिटेल नहीं दे रहा, उसको सौदा करना है और आप करने देना चाहते हो, आप ये कह रहे हो। सर अगर क्लाइंट यदि बोलेगा आप ये क्या, कह रहे हो तो मैं आपसे अग्री नहीं कर सकता। नहीं सर, क्लाइंट का पैसा है, अच्छा क्लाइंट बोल आपको, रहा है कि ठीक है जो करना है करो, मैं आपसे अग्री नहीं करता, मुझे कन्विंस मत कीजिए आप। नहीं, मैं तो सर एमआई से पूछ रहा हूँ कि अगर क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि अब मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, आप मुझे टर्मिनल पे लिमिट दे दीजिए, मैं सिक्योरिटी बाय कर लेता हूँ, तो उसका डिमेट तो एक्टिव है ना, तो सर मैं उसको आप बोलना थोड़ी सकता। एक्सचेंज को ईमेल भेज दीजिए, जवाब दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और भी सवाल? Gajanan ji, your question, please. Mr. Mani, your question. ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दो। Mr. Mani. आपने उनका स्पीकिंग परमिशन ऑन किया है क्या? Yes, sir. हाँ अब जाके चालू हुआ है। मिस्टर मणि, एनजे इंडिया का म्यूट कीजिए ना प्लीज, बीबीएफ टीम। हाँ मणि, मिस्टर मणि, नो स्टिल Mani, म्यूट। please unmute your कोई mic. बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक वी हैव हैड अ गुड डिस्कशन, विल टेक अ लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन विल एंड फॉर टुडे। गजानन जी, एनी क्वेश्चंस आपका हाइड? नो। महेश यादव जी, उत्तम जी, मुरली, हाँ गजानन जी बोलिए। ये पीक लेजर को लेके सवाल था। उसके ऊपर आप भेज रहे, डिटेल भेज रहे हैं सर। मणि, हेलो उत्तम जी। जस्ट 1 मिनट मिस्टर मणि, 1 मिनट मिस्टर यादव। गजानन जी आप बोलिए। हाँ, पीक लेजर को लेके सवाल था। उसके जैसे नरेश जी ने तो कैश में क्लियर कर दिया है, तो वैसे एफएनओ के एमटीएम के लिए क्या करना है? एफएनओ के सर एमटीएम रिवर्स के लिए रहना है, एफएनओ एमपीएम तो हमेशा से ही रिवर्स था, क्योंकि उसका पेन तो मार्केट चालू होने से पहले ही हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो वो भी रिवर्स ही करना है। ठीक यस है, यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू।
Yes, Mr. Money first. सर Yes, sir. हाँ जी गजानन जी आप म्यूट पे जाइए ना। अरे BBF टीम प्लीज यार हैंडल इट। गजानन जी कैन यू गो ऑन म्यूट? Yes, Mr. Money first. Sir, now I am audible. Yes, just 1 minute. I think we have a. The admin of this the. हेलो गजानन जी को पहले आप म्यूट कीजिए। कर दिया। मिस्टर मणि आप बोलिए। हाँ sir, see we are getting issues in EP settling. So we have done a EPA for a non-POA customer. And non-POA customer. Okay. Through Invoke, because we have sold a Kuspa stock from admin. Okay. So what is happening? The Kuspa stock, when we do a Invoke and settling it, it is getting settled on the next day. Early pain is not happening. Early pain is settled from our end, but exchange that CC file we are receiving on next day dated. Oh. That is in BOD we are getting a confirmation. CC, is this a feedback for you? It's something when we do a CC, when we do a Kuspa invoke and sell, early pain is happening, but the response from CC is coming much later. So exchanges in such a case can be reported as early paid in, and if there's an alert generated, it'll close it. Because the fact of the matter is it has been done that. रिपोर्टिंग का जहां तक सवाल है एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिसका अर्ली पेन हो गया है और डिपॉजिटरी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो it has to be reported that way. No, the issue is, sir. Yeah, Murli, you were saying something. Anyway, guys, I'm so sorry, but we will be we'll have to shut in 3 minutes at 6:30. The questions are still flowing, but No. This EPI thing, I'll just explain why it is so. Because we depend upon the EPI file given by the exchange, which we upload into our back office, and then we'll run the segregation file. So these EPI values will be missing in the exchange EPI file. That's why they are not reflected in the segregation file, and it's getting raised as an alert. EPI file is given by the clearing corporations, right? Yeah, it's a clearing corporation. So yes, basically, sir. we are requesting clear corporations to ensure that the Kuspa early pain also appears. Invoke the cases. Kuspa invoke early pain cases should also be there. On TDA itself. That's on it. TDA That is itself. one. Yeah. The second thing is, we have noticed some alerts where client has got sufficient margin. MG13 is properly done. There are only two ways a margin can be brought in by a customer. One is the credit in his ledger, and the other one is pledge securities. Now, we are able to prove that the client had margin, sufficient margin for his positions, and MG13 is clear. But for some reason, because of the various confusions in arriving at the peak ledger balance, we are getting alerts, and even though exchanges agree that the client had margins, they are levying a penalty just because some values got reported wrongly, or it is erroneous on part of exchange, it is right on our part. And because of this, just for reporting sake, they are saying, because of this circular where we have clearly said that value should be properly reported in the segregation file, we are levying a penalty, which I believe is not. It's actually a case-to-case basis. We can't take it as a policy discussion on this too. Yeah. But what you're saying is because of for some reason the segregation figures were not correct. Okay? No, there is always a difference of opinion. Because of difference of opinion, it is not correct. Yeah. And exchange levied penalty. We will take it offline. This is a very specific case. We cannot. Okay. Done. Okay. Uttam sir, one question from Kovaji Group, sir. Yes, please. Yeah. Uttamji, you in the last sheet of your presentation, you had stated that one should allocate amount for error account, although it is quasi-proof.
This is what the MIs have requested. Okay. तो पर्सनली नहीं होना चाहिए, एरर को छोड़ दो ना यार. But MIS बोले कि नहीं हमको चाहिए तो अभी चाहिए. We'll take it up an ISF and request them to stop this. But then till such time, आज के तारीख में you have to do it. Okay, thank you. Right. And जब ये एरर में आपको पता होता है 14 जान से पहले हमें पता होता है कि जा रहा है. It's doable. It's not a life and death. So we can live with it. Cool. So, thank you very much on behalf of Bombay Stock Exchange Brokers Forum and on behalf of the entire capital market stock broking community. First of all, my deepest thank you to the MI team, BSE, NSE, MSC, MCX, SRX, and my clearing corporations, NCCL, NCL, ICCL, and M6CCL for being here, being a part of this program, guiding us, making the PPT, helping us solve member queries, taking feedback from us. जब भी हम education webinar के लिए आपको बुलाते हैं, you're always very willing, very enthusiastic, and तो हम जब भी आप public forum में हमारे साथ आते हैं थोड़ी तो सुना सुनी हो जाती है, लेकिन very patient, very kind of you to hear us out. So thank you so much. इसके अंदर आपका स्वार्थ ही है कि यदि आप इस तरह एजुकेशन वेबिनार करोगे तो आपके अलर्ट्स के काम कम हो जाएंगे. Because members will not make silly mistakes. और फिर अलर्ट्स में वही आएंगे जो जेन्युइनली कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, आपको पकड़ने में मजा आएगा. कई बार ऐसा होता है कि शरीफ आदमी को पकड़ते तो आपका मूड खराब हो जाता है, अरे बेचारा. So thank you so much, and hopefully we'll have more such education webinars, and I would seek your participation and support at all times. Thank you so much, and goodbye. Good Thank you. night. Thank you, everyone. Bye. Bye. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.